Be careful. Name of Lord Krishna's counsel. Sudarshan, Dandiv, Panch Janya, Taran. So please don't go by the color coding on the screen. These are deceptive colors. जान लिया. So 19 answer, very quick. Which now all have given answer. Mostly everyone knew. सुदर्शन, लिटिल कंफ्यूजन. सुदर्शन उनका चक्र का नाम है, जो वो चक्र चलाते हैं. काउंशल मतलब शंख जो है वो पांच जन्य के नाम से है. And this is referred very very clearly in Bhagavad Gita when first chapter में जब हर कोई अपना अपना ब्लो करते हैं शंख, पांच जन्य. And then okay, so Ronnie Prabhu is leading with a significant margin, and he has continuously given 10 correct answers. Hari bol for Ronnie Prabhu. And 5 slots are maintained between all these competitors, rivals. But let's see how we go end this quiz. Form of Krishna at the time of his appearance as son of Devaki and Vasudeva. I held myself back. I was going to answer you, and भगवान ने मुझे रोक दिया कि नहीं बताना है आंसर. जब प्रकट हुए, पहली बार प्रकट हुए, तो कैसे वो उनके सामने आए थे as ordinary baby. God did. So mostly right answer. But still, few felt it's a Virat root. Some felt it's an ordinary child. No, it was a baby with the 4 hands, शंख चक्र गदा पद्म सब हाथों में पकड़े हुए हैं. Silken throats हैं, कौस्तुभ जून. It's such a beautifully decorated 4-handed form of Vishnu ji. And then in the after the prayer, Krishna tells them why he appeared as a Vishnu form, because it may be question may be asked कि भाई भगवान ने ऐसे क्यों प्रकट हुए, normal as a baby, maybe not ordinary baby but extraordinary baby की तरह child की तरह आते, सुंदर से child की तरह आ जाते. वो भी विष्णु भी सुंदर ही है, but why he took, then it explains. He said आप सुतपा and Vishnu की फॉर्म में जब आपने prayers की थी, then I gave you benediction, so I came in this form just to convince you that I have appeared. And just imagine the parental love of Devaki mother after hearing everything also did not change. She still felt fear for Krishna कि एक भगवान में है लेकिन कंस ना कहीं इनको मार दे. That is the love of a devotee. That's why when we serve him also we see कि भगवान को कहीं गरम सर्व ना हो जाए. मान लो आपने खीर बनाई है, हलवा बनाया है, we don't serve very hot. Even if it's Lord, but he can. Our mood is he should not उनकी बर्न ना कहीं फिंगर कुछ ना हो जाए. ऐसे पास्ट टाइम भी हैं ऐसे ऐसे बड़े सुंदर सुंदर इसी लीला के राउंड में. So we treat him like our especially our deities are dependent on us, and they really depend on us, that when we are going to serve, what we are going to serve, hot we are going to serve, sour we are going to serve. So which means we need to be careful. That is a sign of love. Okay, let's move. Let's see any change of positions. Everything remains similar. But क्या है जो पर्दे के पीछे जो दिख नहीं रहे अभी, राजदीप has answered लगातार 11 questions. So I am not sure what is his current position, but he can change the scoreboard very soon. I am expecting. Let's see what happens. What did Krishna bring in his palms for the fruit vendor? एक बार भगवान के द्वार पे एक फ्रूट वेंडर आई है ना, फ्रूट देने के लिए. तो भगवान एक्सचेंज करना चाहते हैं, बार्टर करना चाहते हैं. उन्होंने देखा अपने पिता को, माता को बार्टर में करते हुए. So he brought something called
बटर, कुछ ऑर्नामेंट या कुछ ग्रेन्स. Let's see. All I've answered, so we can skip 9. Everyone answered. Actually, mostly everyone answered right. So it's the grains. Some fell little butter. Oh yeah, Krishna is makhan chor, but उन्होंने माखन इनको नहीं दिया, इनको grains दिए हैं. And ornaments, no, he simple. Just he thought कि कुछ grains देने से भी बात. So actually, when you were seeing maybe the टोकरी में उनके ornament पड़े हुए थे, right? So as soon as the food vendor, she received the grains transform themselves into ornaments for her. So maybe that my picture might have confused the situation. Okay, so we have the same scoreboard. Let's move further. Now only four questions left. कृष्ण कितने समय, कितने दिनों, मंथ, साल के थे जब उन्होंने पूतना का वध किया? Let's see. 19 answers, 20 answers. 7 days. That's the right answer. And yeah, so 7, 11, 21, 3 months. Krishna he's the first demon. He killed Putana 7 दिन के, 7 दिन के. प्रभुपाद जी बड़ा बताते हैं, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली जब पूतना आई है ना, तो उनको वो समझ नहीं पाई थी कि वो उनको देवी दिखने में लग रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ही इज गॉड आफ्टर ऑल, राइट? ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. At 7th day only he killed the first demon. Let's see. Let's move further. No change. Next question. Who is the predominating deity of planet Earth? कौन है? इस अर्थ planet की predominating deity कौन है? As per श्रीमद् भागवतम. Body has stopped. Bhumi Devi. Some thought Lord Vishnu, but precise answer is Bhumi Devi because she approaches Lord Brahmaji. Vaishno Devi, no, she is not presiding deity of planet Earth. Okay, let's move. So now you see Rajdeep has come into top 5. I'm expecting this because continuously 14 right answers. Very good job done. Let's move further. Only 2 questions left. What was the residence of Nanda Maharaj at the time of Krishna's appearance? जब प्रकट हुए तो नंद महाराज कहाँ पर रह रहे थे? Which place he was staying? नंदन कानन, गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन. Let's see. Now it's going 18 answers, few seconds left. Gokul. Some thought it's a Vrindavan, and Nandan Kanan is not here, but Govardhan, Vrindavan, Gokul are near places. All are part of Braj. So जब प्रकट होते हैं भगवान तो गोकुल में जाते हैं, लेकिन गोकुल में क्या है, कुछ ना कुछ डीमन आते रहते हैं. जैसे पूतना आया, उसका तृणावर्त आया, उसके बाद शक्तासुर आया शक्तासुर. तो ये सब डीमन आने के बाद तो उनके जो भाई हैं नंद महाराज के, वो कहते हैं कि यहाँ बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, है ना? और देन ही सजेस्ट अ प्लेस. ही सेज आई हैव सीन अ प्लेस व्हिच इज फुल ऑफ ग्रास, हमारी गायों के लिए. देन दे मूव टू वृंदावन. तो जो अपीयर हुए हैं तो भगवान
मथुरा की जेल से गोकुल जाते हैं. गोकुल के बाद as a cowherd family, they move to Vrindavan in a later years. Okay, so now is going to be the last question. 26th question is the last question. Let's see the scoreboard and let's expect who is going to be the winner of this game. So it's almost a tight competition at last two position. First three seem sorted. Ronnie Prabhu is far leading. Let's see that if something changes. Myra has right answer. Who performed the name-giving ceremony of Krishna and Balram? I think you know the answer because we had this answer in previous one of the questions. So please, I'm expecting all right answers now. Who? Almost everyone did. Actually. Almost. Nand Maharaj ने नहीं किया. Garmuni आए, then he gave the name of Krishna and Balram. After even by that time he has already killed 3 demons. जब उनकी ये होती है तब तक वो 2-3 demon को मार चुके थे कृष्ण. Okay, let's see the final score, and we are on time also wise at a good time, maybe few minutes. Okay, third is Varnika. Very big Haribol to Varnika and Arundhati, and is second, and Johnny Matungu is leader of the show. Runner-ups remain Nitya and Ladi. Very nice job done actually. Very nice job done, and whatever answers we have, gifts for all the three players, top players, and also since some of the answers were not right, it's high time. Today is Krishna's birthday. We can pray to him that we start reading his Krishna book, so knowing Krishna heart to heart. Thank you so very much for joining us in the quiz. I hope you enjoyed this experience, and we'll come back for this very soon, and see you soon. Hare Krishna. Back to you, Ronnie. Back to Vishal Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Can you stop sharing the screen? Yes, bro. I'm just trying to. I'm not sure, Prabhu. Okay. Okay. You're not able to stop the sharing? I'm not able to increase the slide. Okay. Okay, let me do it and then let me stop. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, is Rishit here with us? Yeah, Mataji. Yes, go ahead. Thank you, Prabhuji, for an exciting quiz. Exams, and more exams. Maths, science, history, geography. Is this the only knowledge we need? As an answer to the question, the temple team has made a bridge towards science and spirituality. Now for young kids, now let's hear some experience of some mothers whose kids have been in this program for some time. Hare Krishna. Hare Krishna. As a mother, I feel that in today's world, there is a lot of distraction around the children because of this availability of technology, gadgets, applications, games,
So kids are quite distracted with these, and at this point of time, it is very important to channelize their energy in a right direction and giving them the knowledge so that they can make their decisions, what is right and what is wrong. Since we have joined ISKCON, especially the kids program, Nuts program, and Bhagavatam classes, so kids have developed the good habits and the decision making ability. Their personalities have changed drastically since then, and because they are participating in various activities like drama, spiritual book reading, discussing the spiritual topics with their mentors. So all these things have brought good habits in them. And I would suggest and I would request every parent to visit ISKCON regularly, join these Nuts program and other program for kids so that everybody can be benefited out of it. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. I'm Shivani Sethi, and I'm associated with ISKCON Gurugram. I'm here to share my experience as a parent with you all. So I am a parent of two children. My elder one is 13 years old and the younger one is 6 years old. So we all are living in metropolitan cities, and you know what is a life of a metropolitan life is all about. It's always hush 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 hush, भाग भाग भाग. और इस सिनेरियो में यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज अब एक तरह से बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं. हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं और अपनी जॉब्स के साथ साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में ज़बरदस्त तरीके से बिज़ी रहते हैं. तो इस सिनेरियो में बच्चों की परवरिश, ओवरऑल ग्रूमिंग कैसे अच्छी हो, कैसे हम उनको वैल्यूज़ दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं they are too much exposed to technology. They are taking what they want to see, and there is no filtration happening. So as a parent, I was very much worried how to go about, कैसे करना चाहिए, कैसे values मिलनी चाहिए, और in a fun way, age appropriate way, because आजकल के बच्चों को scientific तथ्य के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है, उनको कन्विंस करना. आप सीधा ये कह देना कि ऐसा करो क्योंकि ये अच्छा है, that doesn't sound convincing at all. So in that very moment I came across this program like Nuts, which was like a blessing in disguise, where children in a very informative way, engaging way, children are involved and they are made to understand the scientific way of spirituality, and it has really helped me a lot as a parent. The children become more conscious about what they are doing, what they are thinking, and it really helps them groom into a better human being. I'm very, very grateful to ISKCON Gurugram for helping the parents like me who are just, who were so helpless. So I'm very thankful to the ISKCON Gurugram team for conducting these workshops. Please keep doing the good work, as it's a blessing in disguise for all of us. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. As a mother, I feel that in today's Hare Krishna. I am a mother to a 14-year-old son, Arindam. Each one of us want to imbibe some moral values, ethical values and character building in our children, apart from their regular studies and various personality development programs. 1 year ago, I enrolled my son in the Nuts program, which is conducted by ISKCON Gurgaon, Badshahpur. It is a wonderful program. And within a year, I find various changes in my son, like he is more thoughtful, he is very responsible, he wakes up early in the morning, he got many new friends, and moreover, he is happy and satisfied. In the Nuts program, they teach life lessons from our scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. And according to the child's interest and skill, they engage children in various activities like photography, videography, communication skills, writing skills, drama, dance, music, etc. Many programs. So
From the core of my heart, I thank ISKCON Gurgaon and the whole NUTS team for taking such a wonderful initiative for our teenagers and for all the kids in our society. So if you want to make a difference in your child's life, make him a part of NUTS team, ISKCON Gurgaon. Thank you. Hare Krishna. This is Archana from Gurgaon, wishing everyone a very happy Janmashtami. Today we are going to talk about our little children, one of the most precious gifts from Lord Krishna. As we all know, parenting is a beautiful journey. But this beautiful journey has its own set of hiccups. Like if talking about my own son, he is 13. But a last couple of years has been a little difficult with him, in the sense that he has been impressed a lot by the outside world. Media, advertisements, books, they have impressed him a lot. But one thing that has come to my rescue is one ritual that we are following from his very childhood. Like when he was a toddler, we have started this habit of reading stories. And basically we take up stories from our scriptures. So these scriptures have a lot of, the stories from the scriptures have a lot of moral values. Apart from the moral values, they keep Krishna in the center. So over the years, like he is already in his teens, but the ritual still continues. And night bedtime stories, they still continue. So over the years, after listening to maybe hundreds and thousands of stories, maybe his mind is wired in a way that once he faces some problem, some kind of a glitch in his own little world, somehow he brings Krishna into the center. Somehow he feels, he tries to connect it with Krishna and then looks for the solution, which I feel is a blessing for me as well as us. Things disturb him a little less. When I see his classmates, other boys his age, I feel he is on a little better side, all by the blessing of Krishna. Second most important thing is his association. He has recently started a NUTS class. It's a class for teenager boys and girls, which Hardik Prabhu has started. It's one of the most beautiful classes. The class is like brainstorms the child into thinking. What do they think? They think the world in the class revolves around the books and the literature revolving Krishna. Hari Bol. It's so inspiring to hear about the children in current ongoing NUTS program. Novel understanding for teenagers in science and spirituality. Thank you to all the wonderful moms for sharing your experience with us. But we are still not satisfied. We want to hear more and more about these amazing children. हाँ हाँ बिल्कुल, ये दिल मांगे मोर, तो क्यों न चले पर्दे के उस ओर, जहाँ आतुर हुए बैठे हैं नन्हे प्रभुपाद कृपा संके होनहार। कुछ होगा नृत्य, कुछ होगा नाटक, देखने को मिलेगा कृष्ण का चमत्कार। So fasten your seat belts. Here's the guest. Over to you, Prisha.
प्रल्हादला विदायिने हिरण्याकाशे पूरक्षाः हिरण्याकाशे पूरक्षाः शिलाटङ्कारनखालाये शिलाटङ्कारनखालाये ईतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा ईतो नरसिंहा भरतो नरसिंहा यत्तु यत्तु यामि ततो नरसिंहा यत्तु यत्तु यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाखाम् अद्भुतशृङ्गाम् बालिका हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गा केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमलवरे नाखाम् अद्भुत बालिका हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गा केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय हो नरसिंहदेव 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 जय हो नरसिंहदेव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो भक्ता प्रहलाद जय हो प्रभुपाद 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 जय हो प्रभुपाद जय हो गुरुदेव 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 जय हो गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्ण बलराम, जय हो कृष्ण बलराम, जय हो वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय हो वृंदावन धाम, जय हो गौरानिताय, 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 जय हो गौरानिताय, जय हो प्रभुपाद, 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 जय हो प्रभुपाद, जय हो गुरुदेव, 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 जय हो गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल, जगत गुरु शीला प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पीकेएस फन विद कृष्णा क्लासेस के बच्चे आप सबके सामने एक छोटा सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। सौम्या के सुंदर नृत्य से आरंभ करते हुए फिर कीर्ति की एक प्यारी सी कविता के बाद सभी बच्चों का भगवत गीता के 10 सिद्धांत का ज्ञान प्रस्तुति। उसके बाद हम उन्नति से जानेंगे कि कृष्णा कौन है और उसके बाद वान्या अपनी प्रस्तुति की सहायता से हमें भगवत गीता से परिचय कराएगी। आशा है आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आएगा और हम सबका उत्साह बढ़ेगा। आप सभी से प्रार्थना है कि हमें यही आशीर्वाद दे कि हम हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में ऐसे उत्सव प्रेम व उत्साह के साथ समर्पित करते रहे। सौम्या, आपका स्वागत है इस वर्चुअल मंच पर। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। हाँ, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। हाँ, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल। Very good dance, very good dance. That's हाँ, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। हाँ, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला। तोरे घूंगर वाले बाल,
बिहारी लाल Very good dance from you. तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला पटका तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला पटका तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका प्यारा लागे तोरा काला तोरे गले वजंती माल तोरे गले वजंती माल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार नजर लग जाएगी बहुत ही मनभावन प्रस्तुति सौम्या ने भगवान के चरणों में समर्पित की। और अब तैयार हो जाइए कीर्ति की कविता वाचन के लिए। कीर्ति, आपका स्वागत। our channel and do not forget to hit the bell icon. If you would love to help Madhavas to contribute to our next project, you can donate. हरे कृष्णा। रात अंधियारी कारी जन्मे जब कृष्ण मुरारी, खुल गई तब बेड़ियां सारी जब जन्म लिए बनवारी। धन्य हुए वसुदेव देव की खुशियां जीवन में पधारी, कंस के अंत की अब तो हो गई पूरी तैयारी। खुल गए सब ताले झट से सो गए दरबान भी सारे, कान्हा को लेकर फिर वसुदेव गोकुल को पधारे। छाई घनघोर घटाए आफत सी बरसती जाए, यमुना का जल भी देखो हर पल बढ़ता ही जाए। गोकुल में जब वो आए सबको सोते हुए पाए, यशोदा की बेटी को लेकर कान्हा को वहां लिटाए। गोकुल में फैली खुशियां सबने फिर जश्न मनाया, जग का उद्धार करने कान्हा इस जग में आया। रात अंधियारी कारी जन्मे जब कृष्ण मुरारी, खुल गई तब बेड़ियां सारी जब जन्म लिए बनवारी। माँ यशोदा का वो लाला सीधा साधा भोला भाला, गायों को चराने वाला गोपियों को रिझाने वाला। माखन चोर वो कहलाता है गोपियों को सताता है, बांसुरी की मधुर धुन से सबके मन को चुराता है। कंस सोचे किसको भेजूं मारने गोपाल को, उसने फिर संदेशा भेजा पूतना विकराल को। पूतना को गुस्सा आया उसने होंठ भींच लिए, विष जो पिलाने लगी स्तन से प्राण खींच लिए। इंद्र जब क्रुद्ध हुआ बारिश का दौर हुआ, उंगली पर गोवर्धन धरा घमंड इंद्र का चूर हुआ। गोपियों के संग कान्हा रसाते रास लीला है, मुखी है शोभा सुंदर वस्त्र उनका पीला है। एक गोपी एक कृष्ण गजब की ये लीला है, राधा कृष्ण का वो मेल नृत्य एवं रसीला है। चाणूर मुष्टिक ढेर हुए कंस का भी वध हुआ, मथुरा के वासी प्रसन्न हुए उग्रसेन का राज तिलक हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता का उपदेश देकर विश्व का कल्याण किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति की थी दीदी। जब पृथ्वीलोक में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब ईश्वर ने स्वयं पृथ्वीलोक में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा की व धर्म की स्थापना की। ऐसे ही ईश्वर के पार्षद थे हमारे पूजनीय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद द्वारा बताई गई गीता जी के 10 सिद्धांत प्रस्तुत करने आ रहे हैं PK1 विद कृष्णा क्लासेस के बच्चे। तो शानी दीदी, आप सभी का मंच पर स्वागत है। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इत्ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी
Nirvishishya Shunyavadi Paschatya Desatarini. The first principle spoken by Srila Prabhupada is that God is one and everything is in him, and he is in everything. Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the source of everything. In chapter 10 of Bhagavad Gita, it is clearly mentioned that all the elements, demigods, universes are because of Krishna, and he is the supreme seed giving father of each and everything. Verse 6.30 says, Yo mam pashyate sarvatra sarvam cha may pashyati tasyaham na pranashyami sacha me na pranashyati. Translation: for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost, nor is he ever lost to me. Second principle states that to render transcendental service unto God is to serve everything that be. Just like to water the root of the tree is to water the different branches and numerous leaves of the tree, or to supply food to the stomach is to vitalize all the senses and the sense organs of the body. Krishna is Sarv Karan Karanam. Verse 9.27 says, Yat karoshi yadasnasi yad juhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva mad arpanam. Translation: whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Further, in verse 9.23, Krishna says that those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. The third principle states that the parts are automatically served when the whole is served, and but the parts are served when the parts are served, the whole may not be served or not served at all. Verse 6.47 says, Yogenamapi sarvesham madgatenantaratmana shraddhavan bhajate yomam same tatamo matah. Translation: and of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That's my opinion. Here, Prabhupada has clearly explained to us that he who serves Krishna, the supreme personality of Godhead, is in the highest position serving all other demigods. The culmination of all kinds of yoga practices lies in the Bhakti Yoga, and in Bhakti Yoga, the idle yogi concentrates his attention on Krishna only. The fourth principle says the parts and the whole being eternally related. It is the eternal duty of the parts to render service unto the whole. Verse 18.46 says, Yatha pravitir bhutalam yena sarvamidam tatam swakarmana tamabhichar siddhim vedanti manavaha. Translation: by worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all providing, a man can attain perfection through performing his own work. A recipient of the services of the past was Satchita Anand Vigraha, that is the all-attractive, cognizant and all-blissful personality eternal. He can reveal himself by his own potency without any help of the external potency called Maya. In order to be cognizable by the limited potency of the parts, and as such, he is not only the greatest of all, but he is the smallest of all. That is his prerogative. In chapter 10 of Bhagavad Gita, as it is titled, the opulence of the absolute Krishna clearly states this principle. The sixth principle states, he is better realized when he, by his causeless mercy, agrees to descend in this mortal world, but he is never realized by the partial speculations of the empiric philosophers, however systematic and long-term it may be. Verse 10.14 says, Sarvametha Dhyamani Yan Mam Veda Shikeshava Nahi Te Bhagwan Vyaktim Vidur Devana Danavaha. Translation:
Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. By the grace of the Supreme Lord, Arjun has understood that the supreme truth is Krishna and that he is the perfect one. One should therefore follow the path of Arjuna. The seventh principle states Sri Krishna is the personality of Godhead and is Samam Gunam, cause of all causes proved by the fact and figures in the statement of Bhagavad Gita. But he reserves the right of not being exposed to the sensual speculations of the empiric philosophers. Sri Brahma Samhita 5.1 says that Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Nadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. Translation: Krishna, who is known as Govinda, is the supreme godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin and is the prime cause of all causes. Further, Bhagavad Gita verse 3.4 says that Lord can be only understood by purification of heart through devotional service, not by any philosophy or austerity. Hare Krishna. The eighth principle says, one should therefore surrender unto him if one wants to know him as he is, and that is the real process to approach the infinite by the infinite as he must. Verse 18.62 says, Tamev Shanam Gacha Sarvabhavena Bharata Tad Prasadat Pram Shantim Thanam Prapsati Shashvatam. Translation: O Sian of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace, you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. In the ninth principle, Prabhupada states, Sri Krishna is easily available by the religion of love, by love and service as conceived by the dancers of Braj, who had practically no education whatsoever and much less any claim for a high class birthright. Verse 18.65 says, Manmanabha madbhakto madhyaji mam namaskuru mam visyasi satyam te prati jane priyo asimi. Translation: Causes seek of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without a fear. I promise you this because you are my very dear friend. In the 10th principle, Prabhupada states, the highest service that can be rendered to the mankind is therefore to preach the philosophy and religion of Bhagavad Gita for all the times, all the places, and all the people. Verse 18.66 says, Sarvadharman parityaj mamekam sharanam vrajah aham tvaham sarvapapebhyo mokshayeshyami ma shujah. Translation: Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Similarly, in verse 18.68, it is further explained. Prabhupada always lays stress on preaching for the benefit of whole mankind. Thank you and Hare Krishna. मेरी कृष्णा से यही प्रार्थना है आप सभी के जीवन में प्रभुपाद द्वारा बताए ये सिद्धांत जीवंत हो सके। आइए अब उन्नति से हम ये जानते हैं कि कृष्णा कौन है। Hare Krishna Unnati, please unmute yourself. Hare Krishna Unnati, please unmute yourself. Yes, please start from the beginning. And please start from the beginning. Hare Krishna everyone. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshutarine. Today we are going to see who is Krishna, why is Krishna the Supreme Personality of Godhead, and what are the expansions of Lord Krishna. Before that, let me tell you a very interesting fact.
Krishna expanded himself into 10,000 billion forms in Ras Leela and 16,108 forms in Dwarka for these many wives. Now, Krishna first expanded himself into Balram. There is only one difference between Balram and Krishna, that Balram is white in complexion. Now, Balram expanded himself into 4 different forms: Vasudev, who appeared in the form of Ram; Sankarshan, who appeared in the form of Lakshman; Pradyum, who appeared in the form of Bharat; and Anirudh, who appeared in the form of Shatrughan. Now, further, Sankarshan expanded himself into Narayan. Narayan is present in the Vaikundham with Lakshmiji. Narayan expanded into Vasudev, who depicts soul; Sankarshan, who depicts ego; Pradyum, who depicts mind; and Anirudh, who depicts intelligence. Sankarshan expanded into Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu. Mahavishnu is there in the causal ocean, and when he breathes, bubbles come out of his body in the form of unlimited universes. Now, Mahavishnu expanded himself into Garbhodakshaya Vishnu. Garbhodakshaya Vishnu is lying in the ocean of water in every universe on an Anshesh. And Kshirodakshaya Vishnu resides in every non-living and living thing in the form of Paramatma. These 3 are known as Purusha avatars. Kshirodakshaya Vishnu expanded himself into 5 different forms: Leela Avatar, Gun Avatar, Avesh Avatar, Yuga Avatar, and Manvantar Avatar. Leela Avatar are unlimited in number, from which 25 are mentioned in Srimad Bhagavatam, chapter 3, canto 1. Some of the Leela avatars are Bor Avatar, Narsimha Avatar, Vamandev Avatar, Vyasdev Avatar, and many more. Now comes the Gun Avatar. In Gun Avatar, there are Vishnu, Shiv, and Brahma. Vishnu is responsible for maintenance as he comes under the mode of goodness. For understanding this, let me give you a very daily life example. जैसे हम जिम जाते हैं, so going gym is easy, leaving gym is also easy, but maintaining the regularity of going to gym is difficult. In the same way, constructing a building is easy, destroying the building is also easy, but maintaining the building for a long time is difficult. So we all also have to be in the mode of goodness for maintaining something. Now, Shivji is responsible for destruction. All the tamasic work comes under Shivji. And Brahmaji uses Rajagun for creation. Now, the third form of Kshirodakshaya Vishnu is Avesh Avatar. Avesh Avatar means when a god empowers a person or a demigod for performing a specific or a particular task. It is further divided into 2, Bhagavad Avesh and Potency. Bhagavad Avesh means godly empowerment, like God Kapila, Lord Rishabh, and etc. And in potency comes Parshuram, Anandev, Narad Muni, 4 Kumaras, and many more. The fourth one is Yuga Avatar, and the last is Manvantar Avatar, which are total 14 in number. Now, Yuga Avatar is further divided into 4, Satyug, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kal Yuga. In Satyug, Hans Avatar came who was white in complexion. He gave us the process of meditation. This is because in Satyug, people were in Satugun, healthy and hearty. Now, in Treta Yuga, God came in the form of Yuga Avatar. He was red in complexion and gave us the process of fire sacrifice. In Dwapar Yuga, Krishna himself came who was black in complexion and he gave us the process of deity worship. And in Kal Yuga, Chaitanya Mahaprabhu came who was golden in complexion. He gave us the process of Nam Sankirtan. So we can see that Krishna is an avatari, source of all incarnations, and all the forms come from Krishna. Thus, we can conclude that Krishna is the supreme personality of Godhead. Hare Krishna. अति सुंदर उन्नति। अब वान्या हमें भगवत गीता से परिचय कराएगी। वान्या, आपका स्वागत है। Hare Krishna, is the screen visible? Yes. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine. Hare Krishna, dear devotees. Today I am going to be talking about the introduction part of Bhagavad Gita as it is.
So Bhagavad Gita start करने से पहले let's talk about Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita it is written by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder and Acharya of International Society for Krishna Consciousness, which is very commonly known as ISKCON or the Hare Krishna movement. So let's proceed. So Bhagavad Gita, it was spoken by Lord Krishna to Arjun on the battlefield of Kurukshetra. You can also see the same on the cover page of this book. Here, Lord Krishna, he is giving these teachings to Arjun on the battlefield of Kurukshetra. So in Bhagavad Gita, basically Arjun, he is asking the questions on our behalf and Lord Krishna is answering them for the benefit of us only, for the future generations. And it is basically Lord Krishna gave this knowledge in the form of a poem, and that's the reason why it's called the Song of the Lord and Gita Upanishad. Now, Bhagavad Gita, it talks about the body, it talks about the soul and not about the body. It also tells us that we are souls and not the body. Now, Bhagavad Gita is one of the holy books of Hinduism. Now, despite being a holy book of Hinduism, it does not mean that it's only applicable to Hindus. It's applicable to all the living entities because it talks about Sanatan Dharma. It was written about 5,000 years ago by Ved Vyasji as a part of Mahabharata and is considered to be the manual of humans. Now, Bhagavad Gita, it has many translations, but the problem is that none of them is authentic. The reason being the author is commenting and expressing their own thoughts and ideas, whereas in Bhagavad Gita, as it is, as the name suggests, it tells us that whatever was provided, whatever Vedyasji wrote, it has been translated and it has been translated by Srila Prabhupada, and he made it easier for us to understand this difficult scripture. Now let's talk about the history of Bhagavad Gita, which Lord Krishna is telling Arjun. So Krishna is here informing Arjun that he first gave this knowledge to Sun God, and then Sun God passed it on to Manu. But what happened was, in course of time, this knowledge it was lost. So now Lord Krishna is re-speaking this to Arjun, and he is starting a new parampara system and making him the receiver of the new parampara system because the old one was broken with the course of time. So the question arises कि इतने सारे characters हैं in Mahabharata, why only Arjun? Why only he selected Arjun? Why not Duryodhana? There are many characters. Why only Arjun? So reason being because Arjun he was a devotee as well as a friend. And to understand Bhagavad Gita, one has to become a devotee of the Lord and develop a relationship with him. And that relationship with the Supreme is called Swarup. And Arjun's Swarup was of a devotee as well as a friend. How we know कि भगवत गीता understand करने के लिए developing a swarup with the supreme is very important. But the question is that how can one develop that relationship, that swarup with Krishna? So we can develop that relationship or the swarup by devotional service. So here, by devotional service, a person can achieve that swarup, and that stage, when one attains that swarup, that stage is called swarup siddhi. Now, in order to understand Bhagavad Gita, one needs to accept Krishna as the Supreme Lord and take Bhagavad Gita in a devotional spirit with the most submissive behavior. So, until and unless you believe the fact that yes, Krishna, he is only the Supreme God, he is the Supreme Personality of Godhead, and you have to take Bhagavad Gita in devotional spirit to understand it. Now, this material world is full of mysteries, and that's why it's called Dukhalyam Ashashvatam, which has been mentioned later in the book in verse 8.15. So now we have Ato Brahm Jigyasa. Every human being suffers in one way or the other, and in order to lead a perfect life, one must realize and try to find out the solutions to their sufferings. So now the Dukhalyam Ashashvatam, that is, this world is full of miseries, right? So now we know that we are suffering in one way or the other. Everyone is suffering here because it's Dukhalyam Ashashvatam, right? So now we know that we are suffering and we have a solution to this, but we have to find out the solution. What's the solution, right? So when we try to find out the solution, that means that when every human being should inquire and find out the reason of their sufferings, and that's Atho Brahm Jigyasa. So Atho Brahm Jigyasa questions can be Atho Brahm Jigyasa questions, we ask ourselves these questions, which are like,
who am I? Who is Krishna? What is the relation between me and Krishna? Am I body or am I a soul? Is Krishna the Supreme Personality of Godhead? Why am I here in this material world? So all these questions which we ask ourselves, these are Atho Brahm Jigyasa questions. And in Bhagavad Gita, you'll find the answers to all these Atho Brahm Jigyasa questions. Now, even though Arjun, he is an eternal associate of Lord Krishna, he is put into ignorance to question Lord and thus he answers them for the benefit of future generations. So, ऐसा नहीं है, Arjun never knew that he is a soul and not a body. He always knew this. He was a very intelligent, very scholarly sort of a person. But Lord Krishna here, you can see it's like a drama happening, right? So, Krishna, he is like Arjun, he is asking questions on our behalf and he is asking questions, so Lord Krishna, he gets to answer them for us. So Arjun, consider that we are asking these questions and Lord Krishna, he is answering our doubts and our problems. Now Bhagavad Gita deals with 5 basic truths which are Ishwar, Jeev, Prakriti, Kal and Karam. So Ishwar is the supreme controller, which is Lord Krishna. Then we have Jeevs. Jivas are we all controlled living entities, so we are Jivas. Then we have Prakriti, this material nature. Then we have Kal, which is the duration of existence of whole universe. Then we have Karam, which is our activities. Now, out of these 5 basic truths, which are Ishwar, Jeev, Prakriti, Kal, and Karam, Ishwar, that is Krishna, he is the Supreme Lord and he has a control over all of these other truths, which are Jeev, Prakriti, Kal, and Karam. Now, Krishna, he is the Supreme Personality of Godhead. My friend Unnati just told you that he is the Supreme Personality of Godhead. He is source of everything. You saw that flow chart. Everything is coming down from him and he is the source of everything. And in chapter 10 of Bhagavad Gita, it's clearly mentioned that all the elements, all the demigods, universes are because of Krishna and he is the supreme seed-giving father of each and everything. So, and thus he is the creator. He has created everything, like all the elements, demigods, universes, everything has been created by him. Thus he is the creator. He is the controller. Because he has created everything, he has a control over all the elements, like all the elements, demigods, everything. He has a control over all of these. And he's the enjoyer. He's the enjoyer of all the rasas, and that's why he's called Rasraj. Whereas we Jivas, we are the cooperators and his eternal servants. So we are meant to cooperate him and we are his eternal servants. And that's the aim of our life. Our aim of life is to cooperate with Krishna, to satisfy him, to serve him. So as I told you, the Supreme Lord, he is the creator and enjoyer, and he is called Rasraj because he is the enjoyer of all the rasas and living entities. That means we people, we are meant to cooperate to satisfy him, and that's the aim of this human life. Now we have the 3 modes of material nature. So we Jivas, we people of Kalyug, and we people, we keep on, we are sometime or the other, we keep on revolving in these 3 modes, which are mode of passion, mode of goodness, and mode of ignorance. Mode of passion is very commonly in Hindi known as Rajagun, mode of ignorance, Tamogun, and mode of goodness, which is Satagun. And Krishna, being Ishwar, he is above all these modes of material nature. Now we have this term purified consciousness, which means acting in allowance with instructions of the Lord. Now, Vedic knowledge is complete and infallible. Vedic knowledge is complete because it's above all the doubts and mistakes, and Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. Vedic knowledge is perfect and should be accepted as it is. Now, we people, I'll be talking about the defects which on Jiva, people suffer. I'll be talking about this later. So, we people, we suffer from these defects, and that's why we can't interpret that what's correct, what's wrong, because we suffer from these defects. And Lord Krishna, being a person who doesn't suffer from these modes of nature or suffer from these defects, he
whatever he's saying is perfect and should be accepted as it is. We don't have to put our thoughts or interpretation ki nahi, whatever this line doesn't mean this, it's wrong or right. We don't have to do this. We have to accept whatever is provided to us, and we have to preach the same however it was provided to us, and we are no one to comment or add our interpretation and everything in whatever Lord Krishna has spoken, because it's the word spoken by Lord himself. So we can't comment that whatever he's speaking is right or wrong. And this knowledge is then coming down through a proper parampara system, and that's why we can say that yes, it's authentic. All right, so now let's talk about the 4 defects which I was talking about. So we have tendency to commit mistakes, tendency to get illusioned, tendency to cheat others, and we have imperfect senses. So a jiva, that means we people, a human being, they suffer from these 4 defects which I told you: tendency to commit mistakes, tendency to get illusion, tendency to cheat others, and imperfect senses. And Lord Krishna, being Ishwar, being the creator, being the Rasraj, he does not suffer from any of these 4 defects. Now, in Bhagavad Gita, serving demigods or rendering service to them is also not approved, which has been explained further in verse 6.47 by Prabhupada. Only a foolish people who are stolen by material desire serve demigods. So I try to make this understand with the help of an example. Suppose you are asked to water a plant. हमें एक plant है and you have to water it. So will you just go and water each and every leaf? There are many leaves. You know, in a tree or in a plant, there are many leaves. You can't water all of them individually, right? So what will you do? You just go and water the roots. Right, so let's apply the same logic here. So if you water the roots, that is, if you serve Krishna, that means you are indirectly serving or watering all the leaves. That is, if you serve Krishna, you are directly or indirectly serving all the demigods. But that's not the case vice versa. If you serve, actually you can't water all the trees, all the leaves, or you can't serve all the demigods. There are many demigods, you don't even know about all of them. So if you serve demigods, that might or might not mean that you are directly serving Krishna. So Prabhupada is saying that only a foolish people who are stolen by material desire, they only serve demigods. We have actually seen this. We might have seen this in your homes, like they say ki mandi ka fast rakh lo, you'll get this, you'll get wealth, health, and all that. If you do this fast, you'll get this or that. So only a foolish people who are stolen by material desire, they have that material desire that yes, I'll get health, wealth, and all that. They serve demigods. So since I've been talking about Parampara system lately in this presentation, I would like to just brief you about the same. So this is the lineage which is starting from Lord Krishna and it's coming down to Srila Prabhupada. So here we have Krishna, then we have Brahmaji, we have Narad Muni, we have Bhakti Vinod Thakur Maharaj, we have Gaur Kishodas Babaji Maharaj, then we have Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, and he's a spiritual master of Prabhupada, and tomorrow is the 125th birth anniversary of Srila Prabhupada. And this knowledge is coming down from this lineage, from this chain. This is the chain of acharyas. And Srila Prabhupada is giving this knowledge through his books and all to us. Thank you so much, dear devotees, for listening patiently. Hare Krishna and thank you. बहुत सुंदर वान्या। आशा है आप सभी को आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप सब मेरे साथ अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। अरे वाह, मजा ही आ गया दीदी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी कृष्ण जन्मोत्सव में नाचूं। तो फिर चलो हम सब मिलकर कीर्तन सुनते हैं और नाचते हैं तथा कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं।
Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा अमित प्रभु, you can start. विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतारे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने कृष्णा कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते वाणी
Hare Krishna, thank you so much for such wonderful and beautiful sweet kirtan. Hare Krishna. So today is a very special day of Hare Krishna. Janmashtami. Should we continue or?
Hare Krishna, Amit Prabhu. Thank you so much. Yes, continue, Pranav. Yeah. So today is a very special, auspicious day of Janmashtami, and we should, on this day, we should focus our senses and our mind on the Lord. But it is very difficult to focus our mind and our heart on the Lord because there's so many distractions in these days. Uh, how can we arrange our lives in such a way that we always remember Krishna and never forget Him? So today, His Grace Nitai Prabhuji will share with us some verses spoken by Lord Krishna in the ancient wisdom of Bhagavad Gita, which will help us to focus and to increase our focus on the thinking of the Lord. So let's all welcome His Grace Nitai Prabhuji with a loud chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, Hare Krishna Pranav, thank you very much for introducing the topic, and my respectful pranams and good wishes to everyone on this wonderful occasion of Janmashtami. So this is a very, very special day because the Lord Himself appears in this world for our deliverance and to establish dharma. So Krishna, when he came, he gave many important instructions. And one of the main instructions that he gave was that we should remember him and not forget him. But we see that in this world, it is very difficult to always remember the Lord. And especially in our modern times, we have so many distractions in the form of different types of entertainment, so many different types of advertisements, right? So many different type of impressions being put on our mind through various channels like media, social media, through friends, right? Through neighbors. So how do we focus our minds on Krishna? So let us hear today from Krishna himself from the Bhagavad Gita. So before that, I will just offer my pranams, and then I will attempt to share with you this beautiful wisdom that Krishna shares in the Bhagavad Gita on how we can always remember him. Om Jnanatirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatesha Tarine Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So again, a warm welcome to all of you, and I will attempt to share with you some very important instructions from the Bhagavad Gita to help us focus our thoughts on Krishna. So the word meditation, right, it actually means contemplation or focusing our thoughts on something or some person. So how can we constantly meditate on the Lord? So in the Bhagavad Gita, Krishna shares a very holistic process of focusing our minds on Krishna. Now, when we think of focusing our minds, we usually think that, okay, we will sit in a secluded place. Maybe we will go out in the park where
There is no, distraction like in the house where maybe someone is watching the TV or someone is cooking in the kitchen. So we think, okay, we'll go to a quiet place in the park or in the forest, and then we will be able to focus our minds. But even if we try today to go to a very secluded place and try and focus our minds, still it will be very difficult. So Krishna, knowing our natures, he has given a very holistic and practical process in the Bhagavad Gita by which we can train ourselves to focus our thoughts on Krishna. And he shares with us four main things on how we can focus our thoughts on Krishna. So the first thing is that whatever we do in this world, right, whatever active work we do, we should try and dedicate our activities to the Lord. So what does this mean? Practically, we all are engaged in some type of active work. Some are working for their families, some are studying, some are retired, but they may be doing some other types of services. So Krishna says that try to dedicate your activities and the fruits of your activities to him. So just like, for example, an author, we see when someone writes a book, usually in the beginning of the book, we say this book, the author writes, this book is dedicated to my father or my mother or my teacher, right? So in the same way, if we can dedicate all our activities to the Supreme Father, right, who is the Lord himself, then that will help us focus our minds on him. So we all have unique talents. We may come from different backgrounds, but regardless of whatever our background is, whatever talents we may have, how much ever money we may have, whatever we may have, right, we can offer our fruits and the activities themselves to the Lord. And this is what Krishna tells us in the Bhagavad Gita in many, many verses. So I will share 3 verses where he says this. In chapter 3, verse number 30, he says, Mai sarvani karmani sanyasadhyatma chetasa nirashir nirmamo bhutva yuddhasva vigate jwara. So the translation of this is, therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. So here Krishna is saying that you surrender all your works unto me, with full knowledge of me. And how? That without any desire for profit and with no claims to proprietorship. Then again he says, in the 8th chapter, he says that Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yuddhacha mai arpita mano buddhir mam evashyasi asamshaya. He says, therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. And then again in the 9th chapter, 27th verse, Krishna says, Yat karoshi yadashnasi yad juhosi dadasi yat
Yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerities you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. So these are very practical suggestions that Krishna is making. So we may not be a great meditator. We may not be a very learned Brahmin. Uh, we may not have so much money or intelligence or resources, but Krishna says, whatever you have, right, whatever you do, you dedicate that work, and whatever fruits you get out of that work, you dedicate that to me. So Krishna not saying that, you need to, offer this much percent or this much money or this type of talent. Krishna open-heartedly, he says that anyone, right, whatever they're engaging in, they should do that as an offering to him. And this will help us remember him and focus our thoughts on him. So the second way that Krishna shares that we can focus our thoughts on him is to use our intelligence to understand the Lord, to understand Krishna's instructions, to understand the purpose of why Krishna comes. So basically, increase our knowledge about the Supreme Lord, right? And how he creates this world. What is our relationship with him? What happens after death? Who we are, right? So how we can realize God. So Krishna says, use your intelligence to understand this knowledge. And he says this in many, many verses. And again, I will share with you 3 verses where he emphasizes this principle of using our knowledge and our intellect to understand the supreme truth. So in the 34th verse in the 4th chapter, Krishna says, Tat vidhi pranipatena pariprasnena seva upadakshanti te jnanam jnanina tattvadarshina. He says that just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. And again, Krishna says that in the following verse, right, in the verse 35, in the same chapter, he says, Yat gyatva punarmoham evam yashasi pandava yena bhutani ashesani drakshasi atmani atomai. Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge, you will see that all living beings are but part of me, or in other words, they are mine. So when we have this knowledge from a self-realized soul, all our illusions become dispelled. And by this transcendental knowledge, we're able to see everyone as a part of the Supreme. Okay? Or in other words, as Krishna says, that as we can see that all the living entities, that they are his parts and parcels. So if we have this knowledge, then how can we not focus our thoughts on Krishna? Because wherever we see, we will see the Lord in everyone. Then Krishna says, again, in the 15th chapter, 15th verse,
He says, Sarvasya chaham hridhi sanivishto mata smritir jnanam apohanam cha vedescha sarve rahameva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. So in this beautiful verse, Krishna is saying that he is situated in everyone's heart. Sarvasya chaham hridi sanivishto. So he is situated in everyone's heart, and from him comes remembrance, mata smritir. From him, smriti, remembrance, jnanam, knowledge, apohanam, even forgetfulness comes from the Lord. And Krishna says something very important, that what is the goal of all knowledge? He says, Vedescha sarve aham eva vedya. By all the Vedas, I am to be known. Because after all, I am the compiler of the Vedanta, and I know the essence or the purpose of the Vedas. So in this way, if we can use our intellect to understand the Supreme Lord, his activities, the purpose for which he comes, our relationship with him, the more knowledge we have about the Supreme, then our minds will be attracted to him, and that will help us to focus our thoughts on the Lord. The third way Krishna says, right, that, okay, even if you can't work, right, and you don't have much intelligence, and you don't have the inclination to engage in wisdom, right, he says, then at least try to remember me and try to see me in everything. So he says that at least think of me. So he says in the 6th chapter, 29th verse, he says, Sarva bhutastam atmanam sarva bhutani chatmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshana. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the Supreme Lord, everywhere. So even if we are incapable of, active work or using our intelligence to pursue knowledge, Krishna says, at least you try and remember me. Just think of me. And how to think of him? He says, you see me, you observe me in all beings. You observe me in everything. And then Krishna says in the 8th chapter that in the 8th verse, he says, Abhyasa yoga yuktena chetasa nanya paramam purusham divyam yati partha anuchintayan. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. And then he says in the 14th verse of, again, the same chapter 8, he says, Ananya cheta satatam yomam smarati nityasha tasyaham sulabha partha nityayuktasya yogina.
for one who always remembers me without deviation. I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. So far we have discussed 3 ways that Krishna has suggested that to dedicate our activities, to engage our intellect in understanding the Lord by getting more knowledge of the Lord. And even if we can't do any of those, at least to think of the Lord by observing him in all beings and in everything. Because since the Lord is the source of everything, everything belongs to him. Krishna says, Aham sarvasya prabhaho. So everything belongs to him. So if we can see Krishna in everything, in all living and in all living entities, that will help us focus our thoughts on Krishna. And the 4th way that Krishna says that you please try to love me. The more you can love me, the more easier it will become for you to think of me. So this is very natural, that the more our love and affection for a person increases, we naturally, in all our thoughts, in all our thoughts, the remembrance of that person comes naturally. Right? We don't have to force ourselves. Suppose a father loves their children. So even when the father goes to the office, maybe whenever they get some free time or at lunchtime, they remember their children, they call, right, to see how they are. When they get out from the office, they think, okay, now I will get something, I'm going home, I'll buy something for my daughter or for my son, or for their wife, or for their parents, or for their friends. So whoever we have love and affection for, our thoughts naturally go towards them. So Krishna says, the more you love me, the more your thoughts will come to me. So Krishna says in the 9th chapter, 34th verse, he says, Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru mame vashyasi yukta vaivam atmanam atparayana. Engage your mind always in thinking of me. Become my devotee, mad bhakto. Offer your obeisances unto me and worship me. By completely absorbed in me, you will surely come to me. And then in the 10th chapter, 10th verse, Krishna says, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. And then in the 14th verse of the 9th chapter, Krishna says, Satatam kirtanyanto mam yatantascha dhridavritaha namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. So Krishna says that Satatam, always engage in glorifying me, perform kirtan, such an easy method for this age to perform this wonderful kirtan by chanting the Lord's names with, in a group, or even taking their names in the japa form, chanting personally, not, you may be in a secluded place and still you can chant.
So Krishna has given such an easy method for this age to remember him. And then he says that always chanting my glories and endeavoring with great determination, yatantascha dhridavritaha, namasyanta mam bhaktya, right? Always worshipping me and bowing down before me, these devotees, they worship me perpetually. Nitya yukta upasate. And then in the 9th verse of the 10th chapter, Krishna says another very beautiful thing. He says, Machita madgata prana bodhayanta parasparam kathayantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. He says, the thoughts of the pure devotees, they dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction. Tushyanticha, ramanticha, bliss, right? Because why? They're always enlightening themselves. Kathayantas chamam nityam. They're always talking about me and sharing my glories. And in this way, they experience such unlimited pleasure. And finally, in the concluding verses of the Bhagavad Gita, Krishna's concluding instruction to Arjun, Krishna says, this is the 66th verse of the 18th chapter. He says, Sarva dharman parityajaya mam ekam sharavan raja aham tvam sarva papebhyo moksha swami ma suchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. So if we follow these 4 simple, holistic processes that Krishna has given in the Bhagavad Gita, that by dedicating all our activities unto the Lord, by using our intelligence to develop the knowledge of the Supreme Lord, and then even if we can't do all this, at least just think of the Lord and observe him in everything and in all beings. Try to do that. And then Krishna says that the easiest way to remember him is to love him. The more we can love him, then we can also dedicate our activities with much ease to Krishna. We can cultivate knowledge more naturally for Krishna. And we can also think of Krishna all the time if we love Krishna. So, and this is what Krishna desires, because this relationship between the living entity and the Lord, it is an eternal relationship. Krishna says that we living entities are his parts and parcels eternally. Mame vamsa jiva loke jiva bhuta sanatana. And the more we can remember these beautiful verses and try to put them in practice, then it will become easier for all of us to focus our thoughts on the Supreme Lord Krishna. So thank you very much for patiently listening. And although I have shared these verses, I am still a practitioner and trying to follow these instructions. So, and I request you sincerely to remember these verses, because these are great guides for us, to practically live our lives and to attain Krishna consciousness. So thank you very much. A very, very happy and prayerful Janmashtami to all of you.
May Krishna bless all of us with sincerity and devotion. Hare Krishna. We are very grateful to His Grace Nitai Prabhuji for sharing these precious gems with all. Now, let's find out how the devotees have decorated their altars to receive the Supreme Personality of Godhead. Krishna Priya Bhakti Vriksha devotees will take us on this tour of visiting different altars, and we have a great fortune today of welcoming His Grace Sarvadrik Prabhuji, who is a very senior Prabhupada disciple. Then, what is the wait? Let's go to Charu Mataji and hear a lot about him. Hare Krishna. Thank you. I would like to welcome His Grace Sarvadrik Prabhu. I would wish to, we would like to welcome His Grace Sarvadrik Prabhu on the special occasion of Janmashtami and would like to hear few words of nectar from him. Hare Krishna. Okay, just let me introduce about His Grace Sarvadrik Prabhu. सर्वाधिक प्रभु जुलाई 1973 में इस्कॉन के संपर्क में आए थे और इसी वर्ष श्रील प्रभुपाद ने इनको दीक्षा दी थी। तब से वे सक्रिय रूप से इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए हैं। हिज ग्रेस सर्वाधिक प्रभु ने 3 मंदिरों सैन डिएगो में हेड कुक और एवं हेड पुजारी के रूप में कार्य किया। पोर्टलैंड, ओरेगन और एक और मंदिर में भी ये सेवाएं की हैं। हिज ग्रेस सर्वाधिक प्रभु के पिता अमेरिकी वायुसेना में एक बहुत सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन डॉक्टर थे और बाद में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। श्रील प्रभुपाद के इस निर्देशन के बाद कि खेतों में रहें और शहरों में प्रचार करें। प्रभु जी उत्तरी अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना में एक कृषि समुदाय श्रील प्रभुपाद के गांव में स्थित हैं और प्रभु जी ने दुनिया भर में विशेष रूप से भारत की यात्रा की। प्रभु जी की तीव्र इच्छा थी कि प्रभुपाद की तरह जीने और प्रभुपाद की तरह उपदेश देने उनके व्याख्यानों और व्यक्तिगत वार्तालापों में प्रतिबिंब हुई। अपनी सादगी, विनम्रता, उपदेश भावना के माध्यम से प्रभु जी ने कई भक्तों को अपने ओर आकर्षित किया। So we would like to welcome His Grace Sarvadik Prabhu on the special occasion of the Janmashtami and would like to hear few words of nectar from him. Hare Krishna. हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। So we all are so excited to see our altar decoration. इसी ओकेजन पर हम सभी भक्त बहुत ही अच्छे से अपना अपना मंदिर सजाते हैं। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये हमारे दिल की भावनाएं हैं। मंदिर सिर्फ एक घर का छोटा सा कोना नहीं होता, ये जहाँ पे हम अपना असली स्वरूप अपने भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं और इसी दिन जो है हम अपना भगवान कृष्ण को अच्छे से डेकोरेट करके, अपना मंदिर डेकोरेट करके हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने भाव जो है भगवान के प्रति हम अपने दिखा सकते हैं। कोई पूछ सकता है इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है?
बिल्कुल जरूरत है। जब किसी का बर्थडे होता है तो हम उसके लिए केक लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं। तो क्यों ना भगवान के मौके पर क्यों ना हम भी 56 भोग लगाएं, क्यों ना हम भी अपने ऑल्टर डेकोरेट करें, हम भी अपने ऑल्टर डेकोरेट करके हम अपनी भावनाएं भगवान के प्रति हम दिखाएं कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं। तभी हम कहते हैं ना, आई लव यू। भगवान को हम कह सकते हैं आई लव यू बाय शोइंग our altar decoration, by showing how much we love God. This is the way we can exchange our love with the God. So I really hope that His Grace Sarvadev Prabhu has joined. Rameshwar Gauranga Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Mataji, no, Prabhuji has not yet joined. Okay. We can begin with the altar decoration, Mataji, meanwhile. Okay, shall we start? Yes. Okay. हो रही है जय जयकार, लड्डू गोपाल आने को तैयार, सज गए हैं सभी दरबार, आ जाओ श्री कृष्ण सरकार। तो आइए हम सबसे पहले देखने चलते हैं ऑल्टर अनुपमा सिंह माता जी का। Hare Krishna, Mataji. I can't find Anupama Mataji here. Okay, कोई बात नहीं। अनुपमा माता जी अपने ऑल्टर को और भी सुंदर सजा रही हैं। तो हम अब वेलकम करते हैं आनंदिता जहानवा माता जी को, जो कि अपना ऑल्टर दिखाएंगी। Hare Krishna. Happy Janmashtami to all of you. Please accept my humble obeisances to all Vaishnavas. Happy Gora Party. Jai Kanhaiya Lal ki। अभी मैं दिखाती हूँ अपना ऑल्टर। हरे कृष्णा। महाराज की जय। गोपाल झूले में यहाँ पर और प्रभुपाद उनकी शरण में गोपाल के यहाँ यशोदा माँ गोपाल को पकड़ते हुए और यहाँ श्री श्री राधा माधव जय मायापुर धाम से। यहाँ पंचतत्व की जय। देवी प्रणाम महाराज की जय। यहाँ से श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान राधा कृष्ण यशोदा माँ बांधते रहे दामोदर जी को। हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको भगवान की शुद्ध भक्ति इसी जन्म में मिल सके और हम प्रभुपाद के मिशन में कार्यरत रह करके हम बाकी बातें जानने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक्स अ लॉट। आपका बहुत सुंदर ऑल्टर था। इससे हमें पता चलता है कि हम कितने अच्छे से हम भगवान को तैयार करते हैं, हम भगवान से प्यार करते हैं। झूला झूल रहे प्यारे नंदलाल, दिखाई दे रहे हैं एकदम कमाल, कर रहे अपने भक्तों को निहाल, मना रहे जन्माष्टमी धमाल।
तो आइए अब हम वेलकम करते हैं काजल भट्ट माता जी का। Mataji, Kajal Bhatt Mataji is also not there. ओके, अनुपमा सिंह माता जी को अब हम वेलकम करते हैं, इफ शी इज देयर। No, Mataji. Okay. Okay. Then we would like to welcome Reena Mishra Mataji. Mataji, उन्होंने लॉगिन नहीं किया है। Okay. We would like to welcome Shivali Pal Mataji. Yes, Mataji is here. Yes. Right. Hare Krishna, Shivalipal Mataji. You can start showing your altar. It's over to you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. I am wishing you a very, very happy Janmashtami to all. So now I am going to show the altar to you all. So I am starting with the entry first. So this is the entry of the altar. This is the Guru Parapara, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Jagannath Das Babaji Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, and Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. These are 6 Goswamis. Tulsi Maharani, Vrinda Devi ki Jai. Now comes the birthday boy, Lil Krishna. I have decorated the temple with rose garlands and marigold. This is Gaur Nitai, Gauranga and Nityananda. Shri Narsingh Dev. And मैंने यहाँ पे 108 नेम्स से लॉर्ड कृष्णा के कुछ नेम्स लगाए हैं, जैसे कि गोविंदा, अनंता, गोपाल, मयूर, माधव, विष्णु, केशवा, श्याम, हरि, and Achyuta. And this is Sri Narsingh Dev and Prahlad Maharaj from Mayapur. And this is the Shiv, Parvati and Ganesh ji. Radha Madhav with Ashtasakhi. Panch Tattva. Jagannath Baldev and Subhadra. Chaitanya Mahaprabhu. So this is the temple I decorated, and the whole idea goes to the own birthday boy himself. Because like each year यही मुझे आइडिया देते हैं कि उनके ऑल्टर को मुझे कैसे डेकोरेट करना है. So thank you everyone. मुझे जान के खुशी होगी कि आपको अगर हमारा टेम्पल पसंद आया हो. And happy Janmashtami to all. And I am glad कि मैं आप लोगों को अपने टेम्पल की डेकोरेशन दिखा पाई. हरे कृष्णा. बहुत बहुत सुंदर, इतना सुंदर, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम तो साक्षात इस्कॉन गुरुग्राम में पहुंच गए हैं। इतना सुंदर फूलों की डेकोरेशन हमने आज तक नहीं देखी, बहुत सुंदर और सच में दिल से बनाया हुआ। शिवाली, आपका बहुत अच्छा ये था। अब हम अपने अगले कंटेस्टेंट को बुलाने जाते हैं। राम दरबार में हर एक सेवक भाव पा जाता है, ऐसा खूब राम दरबार मन में असर कर जाता है। बजरंगी भी घुटनों के बल राम सेवा में लीन होकर राम दरबार की शोभा बढ़ाता है। रे मन तू भी राम नाम भजले, राम दरबार का सत्संग सासंग
तो अब वेलकम करते हैं अनुपमा सिंह माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं अनुपमा सिंह आपका अपने घर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज के इस पावन डे पर आप हमारे घर में विजिट कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये मेरा मंदिर है। ये मेरी गुरु परंपरा है। ये छठ गोस्वामी हैं। ये नरसिंह देव हैं। ये पंच तत्व हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और आज इनका बर्थडे है, इसके लिए हमने इनके लिए केक बनाया है। ये तुलसी महारानी है, वृंदा देवी की जय। और ये श्री श्री राधा कृष्ण दामोदर जी हैं। और ये मेरा पूरा टेम्पल है और ये मेरे घर का सबसे बेस्ट पार्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आपने आज हमारे घर में विजिट किया और वी ऑल नीड योर ब्लेसिंग्स। प्लीज ब्लेस अस एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आज इतने स्पेशल डे पर आपने हमारे घर में विजिट किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जो राधा कृष्ण बिल्कुल 3D स्टाइल में है, बहुत अच्छा लगा। और आपका ये जो केक, स्पेशल केक आपने बनाया है, बहुत अच्छा है। और अब हम नेक्स्ट आगे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे, शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। तो आइए अब हम वेलकम करते हैं दीपिका गुप्ता माता जी का। दीपिका गुप्ता माता जी, आप अनम्यूट हैं, सॉरी म्यूट हैं, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। आवाज नहीं आ रही है माता जी। माता जी को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, दीपिका माता जी जो है। प्रभु जी अगर आप कर दीजिए, रामेश्वर गौरांग प्रभु जी। यस। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। I offer you my sincere obeisances. Today I am blessed that you
have given me this divine opportunity to visit our house, Krishna's house, to visit Krishna's temple. Please आइए और आकर मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं आपको कृष्णा का एक छोटा सा प्यारा सा टेम्पल दिखा सकूं। आइए, ये हमारी एंट्रेंस है, ये कान्हा जी का दरबार है। आइए, ये देखिए, ये उनका प्यारा सा मंदिर जहाँ वो विराजित हैं और हमेशा यहाँ पे बैठकर हमें अपनी प्रेयर देते हैं। मैं आप सबको प्रभुपाद से मिलवाती हूँ। शीला प्रभुपाद की जय। शीला प्रभुपाद जिनके चरण हमारे घर में आए और हम लोगों को उन्होंने ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। छठ गोस्वामी, इनके बिना तो हमारा मंदिर ही अधूरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंदिर में, ईश्वर के मंदिर में, कृष्णा के मंदिर में पधारने के लिए। गुरु परंपरा, आपकी स्वागत के लिए तो मैं क्या बोलूं, आज आपने अपने चरण पधारे, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी की जय। मुझे यह अवसर दिया कि मैं छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सेवा कर सकूं और आपको अपने जीवन में हमेशा देख सकूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी गणेश जी, पंचतत्व, पंचतत्व की जय, बहुत बहुत जय, बहुत बहुत सत्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलराम जी, आपके बिना तो हमारा मंदिर ही अधूरा है। अगर आप नहीं होते तो हम आपको ढूंढ ढूंढ के, प्रार्थना कर करके, आपके पैर पकड़ पकड़ कर आपको अपने मंदिर में कहते कि आइए और कृष्णा के स्थान पर, इस मंदिर पर आइए, विराजित हुई। नरसिंह देव जी की जय। जय नरसिंह देव जी, नरसिंह देव जी की जय। कृष्ण बलराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री बलराम। राधा जी और कृष्णा जी, राधा रानी के बिना तो हमारी कान्हा बिल्कुल अधूरे हैं। आइए, अब मैं आपको अपने प्यारे से नटखट श्री कृष्ण कान्हा जी से मिलवाती हूँ। नमो कृष्ण पृष्ठाय विष्णु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चा विशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये नटखट से कान्हा जो हमारे घर पर पधारे और हमें ये एक ब्लेसिंग्स दी कि आज हम उनकी सेवा कर सके। हम उनके सेवा के पात्र नहीं बन सकते, पर बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे से कान्हा, चंद्रमा सा मुकुट, चांद सा चेहरा, मनमोहनी आंखें, एक क्यूट सी स्माइल, जो स्माइल दिखते ही हमारी सारी दुख, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गले में कंठी माला और हाथों में अच्छी सी प्यारी सी उन्होंने अपने हैंड में अच्छे से अपना श्रृंगार किया है। श्रृंगार के नाम पर तो उनको श्रृंगार करना बहुत ही पसंद है। बांसुरी, बांसुरी तो उन्होंने कहाँ रखी, ये देखिए, फूलों से सजकर चले नटखट अपना जन्मदिन मनाने। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि ईश्वर हमारे पास है, ईश्वर हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। ईश्वर का ये मंदिर वो ईश्वर को ही समर्पित है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु जी, यह हमारा मंदिर है, यहाँ हम संकीर्तन करते हैं और यहाँ आइए, ये मेरे परिवारजन है जिनके हम लोग यहाँ बैठकर प्रार्थना करते हैं। ये मेरी मदर, ये मेरी माता जी, ये मेरे पति देव। आइए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दर्शन दिए। आप हमारे इस छोटे से घर में पधारे, कृष्णा के मंदिर में आपने हमें दर्शन दिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू गिव ब्लेसिंग्स, टू गिव योर ब्लेसिंग्स, टू ब्लेस अस। और अगर हो सके, मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे घर में संकीर्तन हो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
थैंक यू। बहुत ही सुंदर घर बनाया है, बहुत ही सुंदर टेम्पल बनाया है। बिल्कुल दिल से जो है हम उनकी फीलिंग समझ सकते हैं। माता जी ने बहुत सुंदर जो है बनाया है, अपना ऑल्टर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमत धन भला गुरु है मेरा अनमोल। जय श्रील प्रभुपाद की। आइए अब हम वेलकम करते हैं समीक्षा बहल माता जी का। We would like to welcome Poonam Mataji. We would like to welcome, okay, समीक्षा माता जी जो है अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। Hare Krishna Mataji. I can't see Samiksha Mataji here. समीक्षा सुधी। Samiksha Sudhi. Okay. आप लिखो। Mataji, they should be able to unmute. माता जी अब आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। यस। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, here start with my altar front. So now starting with this is the Guru Parampara. And here is the Panch Tattva. यहाँ पे छठ गोस्वामी बैठे हैं। नरसिंह देव and प्रहलाद महाराज। जगन्नाथ जी, बलदाऊ जयमा, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ जी का ऑल्टर है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं राधा कृष्ण झूला झूलते हुए। कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। ये हम चल रहे हैं राम दरबार। ये राम दरबार पर की जय। वृंदावन की श्याम सुंदर। राधा कृष्ण। और ये हैं छोटे से नटखट से ग्वाले, नंद के लाला, ये यशोदा मैया के प्यारे, श्री कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल जी। बहुत ही प्यारे से सजाए हैं आज मैंने इनको। ये झूले में बैठे हैं। और ये और दो लड्डू गोपाल हैं, ये मेरी मदर के यहाँ से आए हैं, मायके से। ये मेरे मदर इन लॉ के यहाँ से हैं। हरे कृष्णा चारू माता जी, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण माता जी। His Grace Sarvadrik Prabhu has just logged in. Kindly please welcome him. Okay. Okay, thank you. So we would like to welcome His Grace Sarvadik Prabhu. Thank you, Prabhuji, for joining. And Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhuji. So I would like to introduce about His Grace Sarvadik Prabhu. His Grace Sarvadik Prabhu जुलाई 1973 में इस्कॉन के संपर्क में आए थे और इसी वर्ष श्रील प्रभुपाद ने इनको दीक्षा दी थी।
तब से वह इस सक्रिय रूप से इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद के सेवा में लगे हुए हैं। हिज ग्रेस सर्वाधिक प्रभु ने 3 मंदिरों में सैन डिएगो में हेड कुक और हेड पुजारी के रूप में काम किया है। पोर्टलैंड, ऑरेगन और एक और मंदिर में भी ये सेवाएं की हैं। हिज ग्रेस सर्वाधिक प्रभु के पिता अमेरिका वायुसेना में एक बहुत सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन डॉक्टर थे और बाद में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। श्रील प्रभुपाद के इस निर्देश के बाद कि खेतों में रहें और शहरों में प्रचार करें। प्रभु जी उत्तरी अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना में एक कृषि समुदाय श्रील प्रभुपाद के गांव में स्थित हैं और प्रभु जी ने दुनिया भर में विशेष रूप से भारत की यात्रा की। प्रभु जी की तीव्र इच्छा थी कि प्रभुपाद की तरह जीने और प्रभुपाद की तरह उपदेश देने उनके व्याख्यानों और व्यक्तिगत वार्तालापों में प्रतिबिंबित हुई। अपनी सादगी, विनम्रता, उपदेश भावना के माध्यम से प्रभु जी ने कई भक्तों को आध्यात्मिक जीवन के अभ्यास में प्रेरित किया और उत्साहित किया। वे जहां भी गए भक्तों के हृदय उनकी पवित्रता और भक्ति की तरफ से तुरंत आकर्षित हो गए। So we would like to welcome His Grace Sarvadik Prabhu on the special occasion of Janmashtami and would like to hear few words of nectar from him. Thank you, Mataji. So before speaking, I offer my Ananta Koti Sashtanga Dandavat Pranam Srila Prabhupada's lotus feet. Beg for his mercy to say something useful for all of you. Mama Jnana Timarandasya Jnanam Janashalakaya Chakshurandinitam Tasmai Shri Gurave Nama Shrishtam Manamati Sachiputranatra Saripam Rupam Tusadhanavapurumatharam Dashvaratam Radha Kundam Giridharam Mahoradikamarasam Bhaktivasya Pratikantapala Shri Gurantam Vatasya Tvam Gopika Vishradishtanayam Pate Sevadikar Vijakar Padme Dasyam Pradaya Pudamam Vajakamane Shri Radham Visayanam Visayanam Satam Radha Sammukha Sangsaktin Sati Sangani Vasani Tamaham Satatam Vande Madhashvara Vande Nanta Adviteshwaram Sri Chaitanya Mahaprabhu Nichopi Yatrasad Sambhakti Shastra Sarvajata Nityananda Mahamani Savananda Parantaram Harinama Kudam Devam Vadaduta Sharam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Vanchata Patibhasta Vasindhi Utitanam Pavani Vaishnavi. So as I offer my humble obeisances to Srila Prabhupada and to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Mahaprabhu, similarly offer my obeisances to all of you, because you're all favored by Srila Prabhupada to have come and sacrifice your life to hear about Krishna, to chant his glories, to worship him, and ultimately to go back to him. So my respectful pranam to all of you. So I'm asked to say something about the unlimited glories of the Supreme Personality of God in 10 minutes. So this is a little challenging, but if I can say anything to, now you're translating, Mataji, I forgot. Is someone translating? Is that required? Yes. Yes, Prabhuji. Okay, so sorry, I forgot about that. So you can translate what I said. Sorry, Prabhuji, can you please repeat? Okay, you have to pay attention. Yes, Prabhuji. First, I'm offering my obeisances to Srila Prabhupada, our Guru Parampara, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and to all of you. तो प्रभु जी अपने दानवत प्रणाम श्रीला प्रभुपाद को, छठ गोस्वामियों को और नित्यानंद प्रभु, गौरांग प्रभु को कर रहे हैं. And all devotees. और प्रभु जी अपना दानवत प्रणाम सारे भक्तों को भी करते हैं. Because all of you are the recipients of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada.
क्योंकि जितने भी भक्त हैं वो श्रीला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने में सहायता देते हैं। So today, very special day, Krishna Janmashtami. आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का। Bhagavad Gita, the Lord's appearance is very beautifully described, chapter 4, first 10 verses of Bhagavad Gita. भगवद गीता में 4th चैप्टर में 10वें श्लोक में बहुत सुंदरता से इसका व्याख्यान किया गया है। Stacharimam vivasate yogam kuktavan hamabhyam manave munur akshvata devaru. That this science of Bhagavad Gita was spoken millions of years ago. But to the sun god spoke to Manu, and Manu spoke to Ikshvaka. तो चौथे अध्याय में बताया गया है कि यह ज्ञान तो बहुत पुराना है। भगवान ने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता विवस्वान ने मनु से इक्ष्वाकु को जाता है यह ज्ञान। So then Arjuna asks, because he becomes confused. He says, Aparam bhavato janma, aparam janma vivastata katami tadvilyanidam tamado kuptavaniti. Is it that Vivaswan is millions of years senior to you? Krishna, you're my contemporary. How did you speak it to him if he's senior to you? तो इसमें बताते हैं अर्जुन यहाँ पे बहुत ज्यादा दुविधा में है और कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि विवस्वान तो आपसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं और आप तो मुझे अभी नजर आते हैं सामने। So then Krishna replies, Shri Bhagavan Uvacha, Bahuni me vitiktani janmani tabacharjana. So that I've passed many Charu, I'm forgetting the second part of the verse. Anyway, he says that I've passed many births. I can remember all of them, but you cannot. तो श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, मैंने बहुत सारे जन्म जो हैं लिए हैं और तुमने भी लिए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, लेकिन अर्जुन तुमको याद नहीं है। And then he says, Ajopi sanabhya yatma bhutanam ishwaropi samprakatam samadashtaya sambhavami atma mayaya. He says, I'm the Lord of everyone. I'm unborn. भगवान बताते हैं कि मैं ही सबका भगवान हूँ। Ajo means that he's unborn, but here we are celebrating Krishna Janmashtami. How is that? If he's unborn, how is he born? तो जैसे बताते हैं अजो का मतलब होता है जिसने कभी भी जन्म ना लिया हो, तो ऐसे कैसे फिर हम जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? So he is the Supreme Personality of God. His body is avyaya, which means it doesn't deteriorate like our body deteriorates. तो इसमें बताते हैं भगवान की जो बॉडी है हमारी तरह से डेट्यूरेट नहीं करती है, हमारी तरह से घटती नहीं है। So Lord Krishna is born like we see the sun born every morning. तो जैसे कि हम देखते हैं कि कृष्ण बॉर्न हुए हैं, क्योंकि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य देवता रोज सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। The sun appears to be born from the horizon and it appears to disappear in the evening at sunset. तो सूर्य जो है सुबह के वक्त उदय होता है और शाम के समय ढल जाता है। But the sun is not born from the sunrise, from the horizon. The sun is always shining. तो सूर्य कभी भी उदय नहीं होता, ना ही अस्त होता है, वो हमेशा से ही चमकता रहता है। So Krishna says he comes for a particular reason also. कृष्ण भगवान बताते हैं वो किसी पर्टिकुलर कारण के लिए यहाँ धरती पर आते हैं। Next verse he says, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam sajamiha. Then he comes in every millennium, put forth to establish the principles of religion. Whenever there's irreligion, he comes to set things right. तो लॉर्ड कृष्ण बताते हैं कि भगवान जो रीजन है, जो कारण है जिसकी वजह से भगवान अवतरित होते हैं, वो है यदा यदा ही धर्म से ने बताया गया है कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। Next verse says, Paratranaya sadhunam vinashaya chadushkatam dharma sansthapanarthaya
Sambhavami Yuge. He comes in every millennium to establish the principles of religion, Dharma Sanstapana. तो भगवान जो आते हैं धरती पर अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, to destroy the miscreants, the dusht, the demoniac element, and to enliven and bless the devotees. दुष्टों को संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। And the Lord says, Janma karma chame jadyam evam yuveti tatvata chatkadehum punah janma naiti mamiti sanjana. If someone understands this, the divyam, the divine nature of the Lord's appearance and activities, he's liberated from this world and he goes back to Godhead. भगवान भगवत गीता के 4.9 श्लोक में बताते हैं कि जो भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाओं को जानता है वो इस भौतिक संसार में दोबारा से वापस नहीं आ सकता। So what does it mean to know Krishna? तो हम कैसे जाने भगवान को? We have very amazing opportunity as Gaudiya Vaishnavas to know Krishna in his most intimate feature. तो हमें गौड़ीय वैष्णव को बहुत ही अच्छा हमें मौका मिला है कि हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। Another sampradayas, they worship Krishna as the supreme Lord, and they approach him very, very carefully. तो हमें जो है भगवान को बहुत सावधानी पूर्वक अप्रोच करना चाहिए। And we should do the same as neophyte devotees. But there's an amazing opportunity waiting for us as we advance in Krishna Bhakti. जैसे नौसिखिया भक्त होते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है, और जैसे जैसे भक्त उन्नति करता है तो हमें और सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। And that is that Krishna relates to his pure devotees in the most amazing, intimate ways. भगवान जो है अपने प्रभु जी, कैन यू रिपीट? That the amazing opportunity of Gaudiya Vaishnavas is that Krishna relates to his devotees in amazing, intimate ways. तो भगवान बताते हैं कि गौड़ीय वैष्णव में हम जो है भगवान के साथ एक बहुत अच्छा तरीके से हम भगवान और भक्त का रिलेशनशिप हम मेंटेन कर सकते हैं। Like we sing Namam Ishwaram Satchidanam Darupam Lasat Kundalam Gokule Bhajamanam Yashoda Viyolukala Namamanam Param Vishtamatyam Tato. The Lord is revealed in worship as Parameshwar, the Supreme Personality, the Supreme Controller. भगवान अपना जो है दामोदर अष्टकम में जो हम भगवान के लिए प्रेयर गाते हैं तो बताते हैं कि भगवान परमेश्वर हैं। But that Supreme Lord, Parameshwar, subordinates himself to his devotee. He's being chased by his mother. भगवान अपने भक्तों के द्वारा डांट खा रहे हैं, अपनी यशोदा मैया से जो है उनसे डांट खाते हैं। Fear personified is afraid of Krishna, but Krishna is afraid of Mother Yashoda's stick. जो भगवान इतने भगवान जो हैं इतने क्रूअल भी हैं और इतने प्यारे भी हैं, लेकिन वो भगवान जो है डरते हैं यशोदा मैया से। Muhu shvasa kanka tire kanka kanta sthita graivadamodaram bhaktivedam. The Krishna is conquered. How? By bhakti. कृष्ण भगवान को जीता जा सकता है और वो एक बहुत सिंपल सा रास्ता है भक्ति के द्वारा। He's enjoying this Leela with Mother Yashoda. His mascara is streaming down his face with his tears. He's breathing heavily. His pearl necklace is shaking. And he's acting as in fear of his mother. He's the Supreme Lord. Mother Yashoda is a product of his energy. Yet he's taking the intimate position of son of the Supreme Personality of his devotee. कृष्ण भगवान जो सबके परम पिता हैं, लेकिन वो भक्त के प्यार में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जो कि आंखों से आंसू निकल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के आगे,
यशोदा मैया की भक्ति के आगे झुक जाते हैं। Brahma Samhita says, Yakaranarnavajale bhajati smarayogam. That millions of universes are coming from this Krishna. ब्रह्म संहिता में बताते हैं कितने करोड़ों सैकड़ों यूनिवर्सेस जो है कृष्ण भगवान से आते हैं। But he subordinates himself by the love of his devotee. बट भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं, उनके प्यार के अधीन हो जाते हैं। The Lord was washing the feet of Sudama. भक्तों के सुदामा जैसे भक्त के चरण जो है उनका चरण धोकर जो है धोते हैं। Carrying Nanda Maharaj's shoes on his head. नंद महाराज अपने पिता के वो जो है चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखते हैं। And driving the chariot of Arjuna. और अपने भक्त वत्सल अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं। Once Chaitanya, coming to Chaitanya Leela, once Chaitanya Mahaprabhu, by his will, manifest high fever. चैतन्य महाप्रभु को एक बारी बहुत तेज बुखार आ जाता है। And the devotees tried to bring different medicines and this, and he said, nothing's working. What is it that will cure your fever? उस टाइम पे किसी भी तरह की दवाई काम नहीं आती है। He said, give me the water that has washed the feet of a pure devotee. तब उन्होंने बताया कि मुझे उस पानी से सही होगा जो पानी शुद्ध भक्तों का धुला हुआ चरण धूलि का होगा। How is that possible? The Lord is drinking water that has washed the feet of a devotee. ऐसे कैसे संभव है? भगवान और भक्तों के चरण धूलि का पानी। So there's many stories like this. Mahabharata is full of stories about how the Lord becomes a servant of his devotee, how much the devotees love the Lord, and how much the Lord loves his devotee. ऐसे अनेकों कहानियां हैं, महाभारत में भरी हुई हैं कहानियां जिसमें कि कृष्ण भगवान अपने भक्तों का से ज्यादा प्यार करते हैं और भक्त उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। So today on Krishna Janmashtami, let us reflect on this wonderful opportunity we have to have love of God. This is the objective. Vita Ragavaya, this is the last verse in the series. Vita Ragavaya Prodha Manmaya Mam Upashuta Bahavo Jnana Tapasa Huda Mad Bhava Magata. Mad Bhava means love of God. We get love of God by this process of Krishna Bhakti. तो इसी जन्माष्टमी के द्वारा ही हम भगवान का जो है प्यार पा सकते हैं। So all of you are extremely fortunate, more fortunate than you can understand. आप सब लोग बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं। So thank you very much for coming forward to serve the Supreme Personality of God and making your life all auspicious. So please share this wonderful opportunity with others. And at the end of your life, Chaktva Dehum Purna Janma Naiti Mamiti Swarjana, you will all go back home to God. Thank you, Prabhuji, for your nice lecture. Wonderful. Thank you. Panchakopati Pustakupa Sindhu Patitanam Pavani Go Vaishnavi Go Srila Prabhupada Ki Jai. I can say one last thing. Yes, Prabhu. That all over India today, all over the world actually, millions of people are coming to the temple to offer their respect to Lord Krishna. आज के दिन जो है पूरे दुनिया भर में सारे जो भक्त जन हैं मंदिर जाते हैं और अपना प्यार का दर्शन भगवान के आगे दिखाते हैं। But tomorrow is the most auspicious day of the appearance of Srila Prabhupada. लेकिन कल का दिन और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण है क्योंकि कल के दिन श्रील प्रभुपाद का जन्म दिवस है। But how many people will come? Only the most fortunate people will come to take blessing from Srila Prabhupada. लेकिन कितने लोग आएंगे उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए? Because how do we get Krishna? We get Krishna from Krishna's devotee. Krishna Prapti, this we sing every morning. That Krishna Prapti, how do we get Krishna? By grace of devotee. तो हमें कृष्ण भगवान दिए किसने? उनके प्योर और वो है श्रील प्रभुपाद। Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakti Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Gaur. Thank you, Prabhuji, for wonderful message.
तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमत धन भला गुरु है मेरा अनमोल। जय श्रील प्रभुपाद की। तो आइए वेलकम करते हैं समीक्षा माता जी का। Hare Krishna Mataji. I don't think Samiksha Mataji is there. Okay, so we would like to see Deepika Gupta Mataji's altar. हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दंडवत प्रणाम जी। I welcome you. I request you to please accept my humble obeisances. I am so blessed that today I got this wonderful opportunity to welcome you in my small home, to welcome you in the temple of my Kanha ji. मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्लीज आइए और पधारिए। आइए प्रभु जी, मैं आपको ये हमारा कृष्णा का कान्हा जी का टेम्पल दिखाना चाहूंगी, जो उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम उनको आपको दिखा सके। ये वह एरिया है जहाँ पर हम सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। प्रभु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमारे मंदिर में अपने चरण पधारे, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। छठ गोस्वामी, इनके बिना तो हमारा मंदिर ही अधूरा है। बहुत बहुत शुक्रिया छठ गोस्वामी। गुरु परंपरा, आज उन्होंने हमें अपने दर्शन दिए और आज ही उन्होंने मेरे इस घर में एक छोटे से मंदिर में अपने चरण पधारे। बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आज उनकी। तुलसी महारानी की जय। जय हो तुलसी महारानी। पंचतत्व, इनके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। आज ये हमारे मंदिर में है, कान्हा जी के मंदिर में है, इनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जय जगन्नाथ जी की, सुभद्रा जी की, बलराम जी की, हम इनके आगे नतमस्तक हैं। जय नरसिंह देव जी की जय। जय नरसिंह देव जी, आप हैं, हमें किसी चीज की चिंता नहीं। आप हैं, हम नतमस्तक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री बलराम जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री बलराम जी। राधा मैया के बिना कान्हा का मन ही नहीं लगता। तो राधा जी के बिना तो कृष्णा जी अधूरे हैं, उनके बिना हम कैसे सोच सकते हैं। अब हम आपको प्रभु जी मिलवाना चाहेंगे, आप सभी को मिलवाना चाहेंगे हमारे नटखट नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे कान्हा जी से, जिनका आज जन्मदिन है। आज कान्हा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। ये प्यारे से नन्हे मुन्ने से कान्हा जी अपने एक झूले में सवार हैं। आप देख सकते हैं इनकी प्यारी सी मुस्कुराहट, इनका प्यारा सा चेहरा, चांद सा चेहरा, मनमोहनी सूरत, प्यारी सी शीतल आंखें और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ मुकुट जो उनके दिल में है। जो उनका दिल ऐसा है जो हम सबको सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देता है। उनका श्रृंगार, क्योंकि उन्हें श्रृंगार तो करना बहुत ही पसंद है, उनके श्रृंगार से तो सब तरफ चमक ही चमक होती है। हम उनके लिए नतमस्तक हैं। कान्हा जी, आज आप हमारी जिंदगी में हैं, आपका हाथ हमारे ऊपर है, उसके लिए हम आपसे दिल से शुक्रगुजार हैं। नमो कृष्ण पृष्ठाय विष्णु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिले। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यचा विशतारिणे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। इस मंदिर में सब बैठते हैं, यहाँ हम संकीर्तन करते हैं और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि कान्हा जी, कृष्णा जी सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे, हमें सिर्फ अपनी सेवा करने का छोटा सा मौका दे सके। आज हम इनकी कुछ सेवा नहीं कर सकते, पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, थैंक यू दीपिका माता जी। Thank you, हो, much. Very beautiful altar. Very nice. हो रही है जय जयकार, लड्डू गोपाल आने को तैयार, सज गए हैं सभी दरबार, आ जाओ कृष्ण सरकार। तो अब हम बुलाते हैं समीक्षा माता जी को। हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी, आई एम स्टार्टिंग। Please, I most welcome you to my temple. So I start with the front of the temple. So here it is. So begin here. ये यहाँ आप देख रहे हैं गुरु परंपरा है। पंच तत्व, यहाँ पंच तत्व बैठे हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये छठ गोस्वामी है। यहाँ नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी के साथ बैठे हैं। हरे गुरुदेव श्री प्रभुपाद। पूज्य गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण। Now here we come to Ram Darbar. जय सीताराम। जय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। प्रभु जी, यहाँ पर कृष्ण बलराम है। कृष्ण बलराम जी बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ जगन्नाथ जी बलदाऊ अपने भाई के संग और सुभद्रा माता के संग बैठे हैं। जय जगन्नाथ, जय बलदाऊ, जय माँ सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। राज्यपुर जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय बलदाऊ, जय माँ सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। राधा कृष्णा झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी। ये लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे बर्थडे बॉय, छोटे से नंदलाल। नंद के लाल यशोदा मैया के प्यारे, नटखट से वृंदावन के लाला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्यूटीफुल कृष्णा, you can see beautiful Krishna. Very beautiful. Jai Gopal. Thank you Mataji for showing your altar. Thank you Mataji. राधा जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास,
इन्हीं से मिलके बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। तो आइए अब बुलाते हैं अनुपमा सिंह माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं अनुपमा सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इतने पावन अवसर पर आप हमारे घर में विजिट कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको अपना मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये मेरी गुरु परंपरा है। ये नरसिंह देव हैं। ये पंच तत्व हैं। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं और आज इनका बर्थडे है, इसके लिए मैंने इनके लिए केक बनाया है। और ये श्री श्री राधा कृष्णा जी हैं और ये तुलसी महारानी है। तुलसी महारानी की जय। Made very beautiful cake. Very nice cake for Krishna. थैंक यू प्रभु जी। Krishna likes to eat. Thank you Prabhu ji. Thank you so much for visiting our house. We Thank you all for are feel blessed inviting. and we all need your blessings. Please bless us. I pray that Srila Prabhupada blesses all of you. Thank you. Hare Krishna Prabhu ji. Dandvat pranam. थैंक यू अनुपमा माता जी। सच में केक देखकर तो हमारा मन ही कर रहा है कि अनुपमा जी के घर जाया जाए। झूला झूल रहे प्यारे से नंदलाल, दिखाई दे रहे एकदम कमाल, कर रहे अपने भक्तों को निहाल, मना रहे जन्माष्टमी धमाल। तो आइए अब वेलकम करते हैं राजश्री माता जी के ऑल्टर का। हरे कृष्णा। हरि बोल हाथी माता घोड़ा, जी। हरे कृष्ण। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आइए मैं आप मेरे घर में आपका स्वागत है। Oh, Krishna is eating very nicely at your home, Mataji. ये है वासुदेव कृष्ण, जो कि कृष्ण को लेके नंदगांव जा रहे हैं। कृष्ण की एक छोटी सी सुंदर सी झांकी। यशोदा माँ कृष्ण की नटखटपन से परेशान होके उनको ओखल से बांध दिया। राधा दामोदर और ये उनके सखा। गोवर्धन पर्वत कृष्ण अपने नख पे उठाया। गोवर्धन पर्वत कृष्ण राधा ये है प्यारे से लड्डू गोपाल। नंद के लाल, यशोदा के लाल, लड्डू गोपाल। ये नटखट लड्डू गोपाल
पेड़ पे झूला झूलते हुए। और ये हमारी वृंदा महारानी तुलसा महारानी की जय। ये ले चलो फ्रूट ना। और ये हमने बैलून से और फ्लावर से छोटे से ऑल्टर, छोटा सा ऑल्टर सजाया। और ये छोटी सी दही मटकी, माखन से भरी हुई मटकियां। ये है हमारा छोटा सा ऑल्टर, मैंने सजाया है झांकी। थैंक यू प्रभु जी। Blessing you. my family. Your Please family bless is my very family. blessed, Mataji. Thank you, Mat. थैंक यू राशि बहुत माता जी। बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत आशीर्वाद also. You have got the real blessings माता जी। देखो फिर जन्माष्टमी आई है, माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है। कान्हा की लीला है सबसे प्यारी, वो दे आपको खुशियां सारी। तो अब वेलकम करते हैं सरिता शर्मा माता जी का। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक सेकंड। एक सेकंड माता जी, वो चालू नहीं हुआ मेरे से, एक सेकंड करना। ये है मेरा फ्लावर का डेकोरेशन। ये मेरे गुरु महाराज, ये मेरी गुरु परंपरा, ये मेरे प्यारे से बर्थडे बॉय लड्डू गोपाल जी, ये राधा माधव, ये हमारे प्रभुपाद। माता जी एक मिनट, मेरा झूला सजाया है, वो झूला का भी दर्शन करवाती हूँ। प्रभु जी दंडवत। I made one झूला decoration also, so I want to show you. Yes, please. Just a minute. Let's see your झूला. कटोरी ला कटोरी। This is Mayapur altar, and this is the झूला. After snan, after abhishek, then I came here. मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठाऊंगी अभिषेक के बाद। ये लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद। Very nice, Mataji. Thank you, Prabhuji. A very nice झूला. Please, Prabhuji, bless me and my family. Mataji, you're already more blessed than you can imagine because you've come to the lotus feet of Srila Prabhupada. You can't imagine your good fortune. Dandvat, Dandvat, Dandvat. Thank you very much. बहुत सुंदर सरिता माता जी, थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। संगीत है श्री कृष्ण, सुर है श्री राधे, शहद है श्री कृष्ण, मिठास है श्री राधे, पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। तो आइए अब वेलकम करते हैं हर ग्रेस आनंदिता माता जी के ऑल्टर का। माता जी अनम्यूट कर लीजिए। माता जी अनम्यूट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आनंदिता माता जी। Happy Krishna Janmashtami to all of you. And I would like to, मैं सबको आपको अपना ऑल्टर दिखाना चाहती हूँ। और प्रभु जी प्लीज गाइड for any mistakes if I've done in the placement or anything.
This is Guru Parampara. My Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, Prabhupada, Samast Guru Parampara, Satguru Swami, Shri Ganesh Ji. And this is the buddy boy, Gopal, Jhula. Panchatatva ki jai. Shri Prahlad Maharaj ki jai. Nice, Giriraj. Gopal, Gopal in his Sharan. Madam Shyam Sundar. Aryan ke khilone, toys. Hathi Ghoda Pal ki jai Kanhaiya Lal ki. And Shri Radha Madhav. तुलसी महारानी की जय। जय तुलसी देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna. I can serve Srila Prabhupada in best possible ways. Thank you Mataji. Such a wonderful altar and बहुत ही अच्छा लगा। इंद्रधनुष ने देखिए दिए हजारों रंग, रंगोली में आके गले मिले हर रंग, रंगोली को देखकर उठते शुद्ध विचार, घर भर को पावन करे रंगों का संसार। तो आइए अब हम देखते हैं नर्म सखी माता जी का ऑल्टर। Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Please accept my obeisances. Warm welcome to my house. Thank you for inviting me to your home. Now I'll present to you my the heart of. Very beautiful Tulsi Maharani. This is Tulsi Maharani. पता नहीं बंद ही नहीं हो रहा ना। This is Guru Parampara. नहीं देख रही हूँ। This is Jagannath ji, Baldev ji, and Subhadra Maharani. This is Srinath ji. And this is Krishna's favorite cow. And this is Nrsingadev. And now is my favorite. Radha Shyam Sundar. Jai Radhe Shyam. Hare Krishna Prabhuji, please bless me and my family. Hare Krishna, you're blessed. Let it be blessed. Let you all be blessed. Hare Krishna, Dandvat Pranam Prabhuji. हरे कृष्णा। Hare थैंक यू माता Krishna. जी। ये नर्म सखी माता जी की डॉटर थी, so please bless her प्रभु जी। Very nice young lady. Amazing आओ young lady. आओ बसाएं मन मंदिर में झांके राधे श्याम की, जिसके मन में श्याम नहीं वो काया किस काम की। तो आइए अब हम वेलकम करते हैं रीना मिश्रा माता जी का। हरे कृष्णा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत Hare प्रणाम। Krishna. Dandavad Please pranam to accept you. my humble obeisances, Prabhuji. I'm Accept so my very, humble. thank you, Prabhuji. I'm so very fortunate that you are here at our place. So, Prabhuji, kindly see the altar and give us your blessings. Hare Krishna. Hare Krishna.
So this is my altar which I have decorated for birthday boy Shri Krishna. Here is our Guru Parampara. And Chhat Goswami. Here is Narsingadev, all protector. Bolo Narsingadev ki Jai. Jai. Jai Bhakti Vigna Vinashana Shri Nishingadev ki Jai. Jai. And here is Panchatattva. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. And here is my Jagannath. Jagannath Baldev Subhadra Maiya ki Jai. Jai. Ki Jai. And here is Sri Radha Krishna. Radhe Shyam. Krishna. And there is, here it is Laddu Gopal, our Laddu Gopal. Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Birthday boy. Two Laddu Gopals. Yes, Jhula Prabhuji. One is Balaram and one is Krishna, or both Krishna? Yes, दो, Prabhuji. एक बलराम है और एक श्री कृष्ण. Yes. एक बलराम है, seriously, yes, Prabhuji, and एक है श्री कृष्ण. तो भजन एक छोटा सा 2 लाइन की पंक्ति है, which I will try to sing. भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे. कृपा नाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे. कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे. जय श्री कृष्णा. और ये हैं श्रील प्रभुपाद, कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, जो कि बहुत ही स्माइलिंग एट द लुक एंड लुकिंग एट श्री कृष्णा. He's feeling so happy. I like this photograph of Srila Prabhupada because he is continuously, ये अपनी मनोहर मुस्कान से श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं. Srila Prabhupada ki jai. He's smiling at you also, Mataji. And our Tulsi Maharani, Tulsi Maiya ki jai. Vrindaye Tulsi Devaye Priyaye Keshvacha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavatte Namo Namaha. And our birthday boy, Supreme Personality of Godhead, Shri Shri Radha Parthasarathi ki jai. So I have kept some bhoga. I have offered some bhoga. This is Rasagulla and Ghevar for our Lordship. Hari Bol. Hari Bol. Prabhuji, so many thank you for coming to our place and please bless us, Prabhuji. मैं आपको अपने बेटे husband से मिलाती हूँ. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Prabhuji. Nice family. Thank you, Prabhuji. So you keep offering Rasgula to Gopal and feeding your family nice Krishna prasad. Everyone go back to garden. Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam, Prabhuji. So very fortunate, lucky. Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Say Hari Bol, sab koi. Hari Hari Bol. Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. थैंक यू माता जी. बहुत सुंदर. श्रीला प्रभुपाद सच में आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स प्रभु जी ने दिए आपको. गाय का माखन, यशोदा का दुलार, ब्रह्मांड के सितारे, कन्हैया का श्रृंगार, सावन की बारिश और भादों की बहार, नंद के लाला को हमारा बार बार नमस्कार. तो आइए अब हम देखते हैं शिवाली पाल माता जी ने अपना ऑल्टर कितना सुंदर सजाया है. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय. जय. So I am firstly starting with the entrance. So this is the entrance of the temple.
is our spiritual master, His Holiness Jayapati Maharaj. This is Guru Parampara, Srila Bhaktivedanta Thakur Nadas Babaji Maharaj. Jayapataka Swami Maharaj well said for Srila Prabhupada. यदि प्रभुपाद न होई तो तौबे की होई तो ये जीवन बही तक खींचे. And it is well said that अगर श्रीला प्रभुपाद ने It's what if he had not come? माता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा पास में आके बोलिए. शिवाली माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. हरे कृष्ण माता जी शायद उनका इंटरनेट चले गया है. We can go to the next contestant, next participant. Okay, no problem. माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की जिन्होंने दुनिया के को प्रेम का रास्ता दिखाया. तो आइए अब हम वेलकम करते हैं मीनू भारद्वाज माता जी का. वो अपना ऑल्टर दिखाएंगी. प्रभु जी, शी इज फ्रॉम कटर. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. Please accept my humble obeisances and welcome to Krishna Katha Desh. Vaishnavi Pranam. This is my altar, Prabhu ji. Oh, very nice flowers also. Shri Shri Radha Shyam Sundar, Shri Shri Krishna Krishna Balaram. Balaram, Gauranitai, and here is my laddu. This is the full look. And Jagannath, Baldev, Subhadra Maya, Prabhu Sudarshan, Ashtasakhi, and Radha Shyam Sundar, Radha Madhav, and the second row, Narsingadev, Narayan, Yashoda Damodar, Panchtat, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advait Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta, Shri Rup Shri Sanatani Bhatta Raghunath, Shri Jiv Gopal Bhattadas Raghunath, Jai Gosai Kari Charana Vandan Jahan Hote Vignasha Bishta Budan. This is my Guru Parampara. And there is Srila Prabhupada. Oh, very nice. You have a nice Guru altar also. Yes, Guru altar also. And I've decorated Jhula also, but right now that birthday bird is sitting here. This is full Vrindavan. This is my Tulsi Maharani. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Very Mataji. nice, Mataji. I thought I'm not audible. This is wonderful. Especially आपका Guru altar is very, very nice. Hare Krishna, would you please bless us so that our bhakti will grow day by day. You've already been blessed by Sripad Jayapataka Maharaj and Srila Prabhupada. What can I do? I can offer one diya to the sun. Thank you, Please Mataji. bless us. Thank you Mataji. for visiting. Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you. Hare Krishna. माखन चोर नंद किशोर बांधी जिसने प्रीत की डोर
हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी, आओ उनके गुणगान करें, सब मिलकर जन्माष्टमी मनाएं। तो आइए अब हम देखते हैं हर ग्रेस विशाखा माता जी का ऑल्टर। माता जी, you can unmute yourself. Hare Krishna, Danvat Pranam. Hare Krishna. This is my Prabhu and Hare Bol Prabhuji. Dandavat Pranam. Thank you so much for coming to our house. I wish I could be there personally. I'm grateful to the pandemic that we got Zoom and we could have a virtual association of you, Prabhu. How else was it possible? This is my mother. The advantage of Zoom is I can go to 50 houses in one night. Yeah, so I'm speechless actually. I have no words. So happy that you could come to our house. This is my mother. Hare Krishna Mataji. Lalita Priya Devi Dasi. She speaks English also. She can understand. Yes, she can understand what So you mean. you're very, very fortunate to have devotee daughter. Thank you. Your whole life is blessed. You produced very nice devotee daughter. Thank you so much. Hare Krishna. Yeah. And so we will just take, you're on the laptop right now. I will just connect with my phone so that we can show you our altar. A very humble one. Yeah. We are still learning how to take care. And माता जी, दो जगह से ऑडियो में लॉगिन मत कीजिए। तो एक जगह मैंने बंद किया है। Is it okay? माता जी, आप लैपटॉप से लॉग आउट कर जाइए या तो। Okay. Yes, that's perfect. Okay. You can flip. Sorry, I have not. Am I audible? Yes, Mataji. You can flip the camera. You can see the arrow on the top. Yeah, got it. So I think I'll just go backward, Karan. Yes, now it is fine. Okay. So actually we had decorated the front door also, but now we are already inside the house, Prabhu. So please welcome to our humble altar. After seeing all the other altars, I am so humbled and feeling inadequate, but Mataji, everything is in our bhakti, our devotion, not how big the altar is. How big is your heart? This is the most beautiful Tulsi Maharani though. Thank you. This is straight from Vrindakund. So this is our altar, and the lotuses have wilted now since morning, but here are Gaur and Itai, Pancha Tattva, and dear Giriraj perched right behind them. And then we have Jagannath, Baladev, Subhadra, Yashoda, Damodar. Sorry, I should have started from Guru Parampara. Our Guru Parampara and Shat Goswami. And we have Simhadev with Lakshmi Mataji sitting at his feet. This is Madhu Mangal giving company to Laddu Gopal. Today he's here. Very good.
And this is our Laddu Gopal. We did nice Abhishek for him in the morning. So now he's perched on his throne. Today I've put him on an elevated asan rather than in a jhula. And these are cows that give him company all day long. This is water. And there is humble bhoga for him. So my Prabhuji helps in maintaining the altar. He did the backdrop with wallpaper. Oh, looks very nice. So the right opposite our altar is the bookshelf full of all the nectar of Srila Prabhupada. So thank you so much for this is your Vani Seva altar. Sorry? This is your altar for Vani Seva. Vani Seva, yes, yes. For hearing from Acharyas, for hearing Srila Prabhupada, the Guru Maharaj. This is as good as the deity. The one altar, Murti, one altar, Vani Seva. Very good. Yes, Maharaj. Yeah, I will keep that in my mind always. And we thank you once again for coming to our house. Yeah, and hopefully someday you will also visit Gurugram and you will have the opportunity to serve you personally. That will be a great blessing in my life. I may come to Delhi. Maybe I'll be coming after Kartik. We'll see how things go. Where are you right now? I live in Mayapur. Okay, Sri Mayapur Dham ki jai. Yeah, that's not very far. You're still in India. Yeah, so yeah, we can expect you coming to Gurgaon then. I left America. I sold my house in America, moved to India 3 years ago. Okay, okay. Our gain. I said bye-bye, America. Jai, America's loss and our gain. Maybe. Srila Prabhupada ki jai. His grace, Sarvadrik Prabhu ki jai. Sai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Janmashtami Maha Mahotsav ki jai. Thank you, Vishakha Mataji. Such a wonderful family and a wonderful altar. And I hope, Prabhuji, you have enjoyed all the altars. And yes, all very nice. Yeah, Prabhuji, everybody is, taking the blessings. So please, please bless my husband, my family. My son is in 9th class. Hare Krishna. Both very blessed. Husband and wife together. Lakshmi Narayan. Thank you, Prabhuji. Just please bless us to give us bhakti. You take blessing from my blessing is you hear from Srila Prabhupada, you push on Prabhupada's movement, become pure devotees, go back to Godhead. Thank you, Prabhuji. Be the best devotee you can be. That's all. Make progress in life. Thank you, Prabhuji. No fanaticism. Yes, Prabhuji. Your Prabhuji is looking very handsome with mustache. Thank you, Prabhuji. So, Prabhuji, any special message if you would like to give to my Prabhuji? That you be good husband and good father. This is also part and parcel of your devotion to God. Okay, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna ji. Hare Krishna. Can you hear me? Prabhuji, can you hear me? Yes, I hear you perfectly. Okay, Prabhuji, this is my son. This is Sanat, and this is his best friend Ruhan. So both of them, I am. Nice to see you both. Prabhuji, I want you to bless my son and Ruhan,
and because I have started giving him every morning, I have started giving him Bhagavad Gita lesson orally. So I am just trying to raise his interest in Bhagavad Gita, and he is also finding it interesting. He listens to me very carefully. I try to read him and then explain him like a story. So I just want you to bless him that he develops more and more interest in Bhagavad Gita so that he start reading it himself. Prabhuji, your family is blessed already. Number one, you've been born in India. Number two, you're reading Bhagavad Gita. Yes. Bhagavad Gita is a text not just for Indians, but it's for the whole world. And Arjuna was most successful man because he was the best friend, beloved friend of Krishna. The spiritual life means what? Make Krishna your best friend and make progress in your life. Whatever you do, become crorepati, become CEO, become pujari, whatever your life is, you make Krishna your best friend. And we say in English, fly high, go high in your life, making Krishna your best friend. That's my blessing to you. Prabhuji, I'm really blessed to hear such words from you. I really want him to start reading, and so that at the initial stage, I am trying to develop his interest. So I'm not forcing him to read. I just read for himself. So I read him, and he listens. And at the same time, I also get a chance to repeat again and again the different chapters. Yes. Then he's become like your guru, because he's making you read Bhagavad Gita. Yes, and he's very interested. So I recently explained him how the soul comes to the human body through the rain, and then it goes to the land, and then it goes into the crops, and this is how we eat them, and then how it comes to the. He find it very interesting. He says that I said that this is a very high. This is the complete science, and this is just not a book. Very scientific. Topmost science. Yeah, this is very, very scientific. It is not like somebody just wrote it. I try to explain him that this is very scientific book. There is no religious process in the world that compares to our Sanatana Dharma, our Vedic literature. Other religions have one book maybe. We have thousands of books, and still we know there's more to be known about God. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. I would like to welcome All of you. Shivali Mataji because her internet got disconnected. So I'll just. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Prabhuji, Dandvat Pranam. Sorry, I was interrupted due to internet issues. So Hare I am. Krishna, Mataji. Hare Krishna. Mataji, we are getting late for the next program. And the temple. Prabhuji, I will only take 2 to 3 minutes. Yeah. Please. Yeah, Okay, me Mataji, too. Just bless my son. Mataji, let's very quickly. Mataji, He's looking very nice in dhoti kurta. I can see he's a very good boy. Okay, I will start. It's young men like this that are the future of our movement. He is doing Nirjala today. Please bless him that he may serve Guru, Sadhu, and Shastra. That's my only desire. Please bless him, Prabhu. Yes. This is Parth. Please accept. Thank you, Shekha Mataji. We will quickly take Shivali Pal Mataji's altar. Okay, so I am starting again. So this is the entry of the altar. And moving towards the altar. First, I will show you our spiritual master, His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. It is well said by His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. Yadi Prabhupada na hoito, tobe ki hoito, ye jivan bahita kaise. So, and he is Bhakti Siddhant Saraswati Thakur, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, Bhakti Vinod Thakur, and Jagannath Das Babaji Maharaj. This is 6 Goswamis. This is Tulsi Maharani. Vrinda Devi ki Jai. Jai. And now I will come to the birthday boy himself. It is little Krishna. And for today also, he is the own creator of this beautiful decoration. He gives me idea every year so how to decorate his temple. So I have made this Singhasan for him by myself. This is I have decorated with lotus petals and beautiful peacock feathers. And this is Gaur Nitai, Gauranga and Nityananda. And this is the cows
and elephants which I put for them. So मैंने यहाँ पे Lord Krishna के 10 names लिखे हैं. The first one is Govinda. Govinda, the one who pleases cows. Ananta, endless Lord. Madhava, knowledge-filled God. माता जी थोड़ा सा क्विक करेंगे. Okay. Gopal, Hari, Keshava, Shyam, Vishnu, Achyuta, and it is Shiv, Parvati, and Ganesh ji. Radha Madhav with Ashtasakhi Mayapur, Panch Tattva Mayapur, Jagannath Baldev, Subhadra Mai, and this is Chaitanya Mahaprabhu. So this is my altar. Thank you, Prabhuji, for Very nice. Giving us Thank your you, time, Shivalaya Mataji. and I need your blessings to rise in bhakti and follow the teaching of Srila Prabhupada. Nasteva, chant Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Janmashtami Maha Mahotsav ki jai. Mahaditi Maha Mahotsav ki jai. Thank you, Prabhuji, for your precious time, and I hope you have enjoyed altar decoration. Yes, you want to see my altar? Yes, Prabhuji, of course. I'm gonna have to take my laptop. Or we can go. The flowers are all wilted, and I think you can see. These are Jagannath. Can you see? Hari Bol, Jai Jagannath. I'll quickly take pics. Were you able to see? Wonderful, Prabhuji. Amazing. And Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. Wonderful. Hari Bol, Hari Bol. Okay, thank you. So nice. I feel very encouraged to meet so many nice devotees and have darshan at your altars. The best part of my Janmashtami is visiting all of you today. Thank you, Prabhuji. We are very Right, grateful thank to you. you for your precious time and to have your darshan virtually. Thank you, Prabhuji. Please bless. Okay, Hare Krishna. Carry on, carry on. Hare Krishna. Over to you, Rameshwar Prabhuji. Wasn't it so overwhelming to see the beautiful altars? Wait till you see how lovingly the devotees have arranged Abhishek in their homes. We are so fortunate because this Janmashtami is online, so we will get a sneak peek in their homes and witness the beautiful Abhishek of so many rickshaws. So what are we waiting for? Let's go, Hari Bol. Over to you, Krishangi's Bhakti Rickshaw. Hare Krishna. Am I audible? Yes, you are Yes, quite Mataji. audible. Yeah, Shivli Mataji and Kirti Mataji will be doing first the Abhishekam. Shivli Mataji and Kirti Mataji, can you switch on your video? Hare Krishna. Yeah, Shivli is there. Kirti, can you come? प्रभुजी इन दोनों को स्पॉटलाइट कर दीजिए.
थोड़ा सा कैमरा ऊपर में कुछ पढ़ना आजकल
Krishna
Krishna
After the bath, the Lord must feast. But what must he feast on? आज माखन चोर आएंगे चखने ताजा सफेद माखन, दूध दही मलाई से भरकर रखना मिट्टी के बर्तन, लड्डू की होगी थाली एक एक होगी संदेश की, इतने सारे व्यंजन होंगे कुल मिलाकर भोग 56। तो फिर चलो राधा रायण ब्रह्म की वृक्ष के संग लगाने ठाकुर जी को भोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare
যশোমती চিতহরি নন্দ যশোমতি চিতহরি বেল হল দামোদর ঈশায় কান দামোদর ঈশায় কান ভোগ মন্দিরে বসি করহ ভোজন মন্দিরে বসি করহ ভোজন নন্দেরানি দেশে বসে গিরিবর জারি বলদেব সহ সখা বৈশে সরি সরি বলদেব সহ সখা বৈশে সরি সরি সুক্তা সখারি বাজি নালিত কুষ্মান্ড দলি দানা দুগ্ধ তুমি দলি মোচা কন্দ মুদ বোর মাস বোর রতিক ঘৃতানা সস্কুলি পিষ্টা কাকির পুলি পায়াসন্না কাপুর অমৃত খেলি রামাকির সারা অমৃত খেলি রামাকির সারা অমৃত রসালম দ্বাদশ পকোরা অমৃত রসালম দ্বাদশ প্রকারা লুচি চিনি সার পুরি লাডু রসবালি লুচি চিনি সার পুরি লাডু রসবালি ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতুহলী ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতুহলী রাধিকার পকায়না বিবিধ ব্যঞ্জন রাধিকার পকায়না বিবিধ ব্যঞ্জন পরমানন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন পরমানন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন চলে বলে লাডু খাই শ্রীমধু মঙ্গল চলে বলে লাডু খাই শ্রীমধু মঙ্গল বগল বজায় দেহ হরি বলো বগল বজায় দেহ হরি বলো রাধিকারি গানি হেরি নয়নের কোণে রাধিকারি গানে হেরি নয়নের কোণে তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবানী কৃষ্ণ যশোদা ভবানী ভোজনান্তে পেয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ভোজনান্তে পেয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি সবে মুখ প্রকালয় হরে সরি সরি সবে মুখ প্রকালয় হরে সরি সরি অষ্ট মুখ প্রকালিয়া যত সক গানে মুখ প্রকালিয়া যত সক গানে আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সানে আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সানে জাম্বুলা রসালানে তাম্বুলা মশালা রসা मधुर हमने किए कीर्तन सुंदर मधुर हमने किए अति भव्य विग्रहों के दर्शन हर घर घूम घूम और हमने भावग्रही जनार्दन का अभिषेक किया शीतल पंचग्रव्य रंगारंग द्रव्यों के साथ हमने देखे 56 भोग शानदार रसीले स्वादिष्ट और अनगिनत व्यंजन। तो चलिए अब शुभांगी और हृदय भक्ति वृक्षाओं की माता जीस के साथ देवनगरी की कृष्ण लीलाओं का श्रवण करें। हरि हरि बोल। ओवर टू यू माता जीस।
Hey Krishna Mataji, you are not audible. Mataji? Yes, Mataji, now you are audible. Hare Krishna. एक सेकंड. Yes, Mataji, अब आ रही है आवाज. इसको ब्लूटूथ को बंद करना पड़ेगा, उनको आवाज नहीं जा रही है मेरी. हरे कृष्णा नम्रता, अब आवाज आ रही है बिना. इसको बंद करो, इसको बंद करो. जस्ट अ मिनट, इसको बंद करो. वो इसको बंद कर, नहीं चल रहा है वो. इसको बंद करो प्लीज. इसको, अरे इसका हेडफोन को बंद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Now you are audible. मुझे आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है. She is not able to hear us. We are able to hear her. Computers are not working. कि तुम्हारी आवाज आ रही है पर तुम्हें हमारी नहीं आ रही. अभी नहीं आ रही माताजी, वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा हेडफोन. माताजी आप हेडफोन्स हटा दीजिए. यू हैव टू रिमूव द हेडफोन्स. उनको चैट में लिख के बताओ, उनको तो सुन नहीं रहे हैं ना. लेट मी कॉल माताजी. हरे कृष्ण. अभी हरे कृष्णा, अभी तो मुझे दिखा रहा है. अब आई क्या? आई ना? ओके. हरे कृष्णा. उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम. और जो ये डिस्टर्बेंस हुआ उन सबके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. मुझे इस अवसर पर हमें मौका दिया, उसकी वजह से मैं अपने सारे अगेन अनम्यूट हो गया. धर्म सखी फिर आवाज नहीं आ रही. माताजी, I think you need to disconnect your laptop Bluetooth. आपका हेडफोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है. Okay. हरे कृष्णा. माताजी इज फेसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टीज. माताजी अभी अपने मोबाइल से लॉग इन कर रही हैं. एंड मीनवाइल आई थिंक नवनीत माताजी, शायद आपने स्क्रीन शेयरिंग करनी है. थैंक यू सो मच माताजी. आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए एंड जो भी हैं दे कैन स्टार्ट रीडिंग एज वेल. हरे कृष्णा प्रभु, should I start reading? Yes, please start reading. बिंदु जी, हरे कृष्णा. बिंदु जी, start reading. अब मेरी आवाज आ रही है? धर्म सखी आवाज आ रही है पर बहुत एको हो रहा है. हाँ जी. अब ठीक है? अब ठीक है. हाँ जी. तो मैं बिंदु खन्ना माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब स्टार्ट करिए पढ़ना. हरे कृष्णा. कालिया दमन.
जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प या कालिए दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्यवाही की और उसे यमुना छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब शुकदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिए को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अधिकाधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। शुकदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिए नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। वे कृष्ण, जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। कदम्ब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतया वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोककर वे उस विशैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कदम्ब वृक्ष से कूदे, एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। ज्यों ही भगवान कृष्ण जल में कूदे, त्यों ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक अप्लावित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है, क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार हैं। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की, जिसे कालिए नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असह्य थी और उसे समझते देर न लगी, यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय हैं, क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनका रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे। वे श्रीवत्स, रत्नों तथा पीतांबर से सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिए अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ, अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गौवें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंतातुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी, तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। यह सब आसन्न महान संकट के संकेत थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना चरागाह गए हैं। ज्यों ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी, तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण तथा कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक और चिंता से अभिभूत हो उठे, क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ न था।
और उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है, और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात ही न थी। इसलिए उन्होंने स्वयं ही इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे, और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंततो गत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावन वासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गौवें और बालक कृष्ण को कालिये नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब वे सब और भी अधिक शोकमग्न हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। यद्यपि वृंदावन वासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गौवें और बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका चेहरा, उनके मीठे शब्द तथा अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। यह सब सोचते हुए तथा यह सब देखकर कि कृष्ण अब कालिये नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत हो रहे थे। कृष्ण भावना अमृत की ये चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। मैं गुंजन भूटानी माता जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अब वे आगे इस लीला को और पढ़ें। हरे जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें मूर्छित हो गई। अन्य संदिग्ध मित्रों के नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी लगी थी, जो नदी की तरंगों जैसे उमड़ रही थी, किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य ललाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रहीं, मानो मृत हों, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जो कृष्ण पर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को संलग्न थे, किंतु बलराम ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले तथा गायें सभी मृत प्राय हैं और आसन्न मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा, उसे काफी जोर खींचतान लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा न रहा। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला दिए। उसने अपने नथिनों से विशैली फुटकार की। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विशैले नेत्रों वाले नाग कृष्ण को देखा।
कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण और कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे जो इधर उधर हिल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे, दुदुम्बियां बजाने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत एवं स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए ऐसे ही हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर भी आ बनी। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फुत्कार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्म रक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अतः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबों के स्वामी परमेश्वर हैं। तब सर्व पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरणासन है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश और आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों सामने की उनके समक्ष और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नाग पत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों और शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा और दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचती हैं कि कालिया को दिया गया दंड, दिखने में लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसके आप नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि कालिया नाग प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका हो, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों उसके फनों आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण
हो चुके हैं। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए हुए होंगे। हरे कृष्णा। अब मेरा पल्लवी सोनी माता जी से अनुरोध है कि आगे इस कहानी को पूर्ण करें। हरे कृष्णा। नाग पत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता, तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षा पुस्तक में भी कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह ना करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए अपने कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नाग पत्नियां आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिये को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु तो भी वह कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तत्वों में से वे विस्मित थी। इसी तरह से वे आगे प्रार्थना करती रही, हे भगवान, हमें यह देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। अतः यह कैसे संभव हो सका कि कालिये नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ। हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। ना ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों यथा सिद्ध लोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, ना ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, ना ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। नाग पत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और पति रूप हैं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष तथा भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप हैं, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न तथा भिन्न हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप साक्षात पूर्ण
अपूर्ण ब्रह्मांड है, फिर भी आप उसके सृष्टा हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक और पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनो तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप अनंत, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर, समस्त उत्पत्ति के केंद्र और सब जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्रोत हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सबों को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, आप भगवान श्री कृष्ण हैं और परम भोक्ता भी हैं, जो अब सात्विक भाव रूप वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्वेद रूप में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न हैं और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव या तो विस्मृति से आवृत हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ समझते हैं कि आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकते हैं। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यद्यपि आप इस दृश्य जगत से भिन्न हैं, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं। अतः हम आपको नमस्कार करते हैं। पल्लवी माता जी से पढ़िए, आप थोड़ा सा स्पीड से पढ़ लीजिए, फास्ट। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विविध शक्तियों, सतो, रजो तथा तमो गुण के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने दृष्टि मात्र से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति की उन विभिन्न शक्तियों को, जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, तीन प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के लिए वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत हैं और परम शांति के इच्छुक हैं, उनके लिए आपके विष्णु रूप शांत अवतार की पूजा की संस्तुति की जाती है। हरे कृष्णा। अब मैं प्रिया शर्मा माता जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस लीला को आगे बढ़ाएं।
हरे कृष्णा। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सर्वस्व है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। आप हम पर कृपा करें कि इस परम पापी को क्षमादान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है और आप हर एक का पालन करते हैं। यह सर्प भी आपकी संतान है, अतः आप हमें क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जानने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवा अर्पित कर रही हैं, क्योंकि हम सभी अपनी आपकी नित्य सेविका हैं। आप हमें जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह आपकी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नाग पत्नियां द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही भगवान के प्रहर से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया के प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और विषालु हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्रकृति स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। यद्यपि इस स्वभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, भौतिक प्रकृति के चंगुल से छुटकारा पाना अति कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कालिया ने आगे कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति के उन समस्त गुणों के मूल्य सृष्टा हैं जिनसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप हैं जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अपरिया भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहे तो मुझे दंड दे या मुझे बचा लो। यह सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित ना करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्बाध होकर हमारी गौएं तथा ग्वाल बाल पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने यह भी उद्घोष किया, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहां मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रख कर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है तो उसके सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई नहीं करेगा। भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियां पर प्रसन्न हुए। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर
उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वे बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण ने आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम गोवर्धन लीला पढ़ेंगे। मैं रेणु चोपड़ा माता जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अब वे इस लीला को शुरू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गोवर्धन पूजा। जब कृष्ण तथा बलराम वैदिक यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों से बातें करने में व्यस्त थे, तो उन्होंने ये भी देखा कि स्वर्ग के राजा तथा वर्षा के लिए उत्तरदायी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सारे ग्वाले एक वैसे ही यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण भक्त का ये दृढ़ विश्वास है कि यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत तथा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह अन्य समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के विशुद्ध भक्त को वेदों द्वारा बताए गए किसी अनुष्ठान को नहीं करना होता, ना ही किसी देवता की पूजा करनी होती है। कृष्ण भक्त होने से ये मान लिया जाता है कि उसे सारे वैदिक अनुष्ठान या देवताओं की पूजा संपन्न करनी है। वैदिक अनुष्ठान करने से या देवताओं की पूजा करने से ही कृष्ण भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, बल्कि ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगा रहता है। वह पहले से ही सारे वैदिक आदेशों को पूरा किए रहता है। कृष्ण भक्त अपने भक्तों द्वारा ऐसे सारे कार्य बंद करवाने के लिए अपनी उपस्थिति में वृंदावन में अनन्य भक्ति स्थापित कर देना चाहते थे। सर्वज्ञ कृष्ण को ज्ञात था कि सारे ग्वाले इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, किंतु शिष्टाचारवश उन्होंने अत्यंत विनय से तथा आनंद पूर्वक नंद महाराज तथा अन्य गुरुजनों से इसके संबंध में पूछना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, विशाल यज्ञ के लिए ये सारा प्रबंध क्यों हो रहा है? इस यज्ञ का क्या फल है और ये किसके निमित्त है? ये किस तरह संपन्न होता है? कृपा करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं इसका उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। उनकी इस पूछताछ पर उनके पिता नंद महाराज ये सोचकर मौन रह गए कि ये तरुण बालक यज्ञ संपन्न करने की गुत्थियों को नहीं समझ सकेगा। किंतु कृष्ण ने हठ किया, हे पिता, उदार तथा संत पुरुषों के लिए कुछ भी गोपनीय नहीं होता। वे किसी को भी ना तो मित्र मानते हैं और ना शत्रु और ना ही तटस्थ, क्योंकि वे सबों के प्रति सदैव उदार रहते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इतने उदार नहीं होते, वे भी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से कुछ नहीं छिपाते। हाँ, जो लोग शत्रुता रखते हैं, उनसे गोपनीयता बरती जानी सकती है। अतः आप मुझसे कुछ भी गोपनीय ना रखें। सारे के सारे मनुष्य सकाम कर्म में लगे रहते हैं। इनमें से कुछ जानते रहते हैं कि कर्म क्या है और उन्हें फल का भी पता रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्देश्य या फल को जाने बिना कर्म करते हैं। जो व्यक्ति पूरी समझ में कर्म करता है, उसे पूरा फल मिलता है, और जो बिना जाने ऐसा करता है, उसे पूरा फल नहीं मिलता। अतः आप मुझे इस यज्ञ का प्रयोजन बता दें जिसे आप करना चाह रहे हैं। क्या ये वैदिक आदेशानुसार है या यह केवल लौकिक उत्सव है? कृपया करके मुझे इस यज्ञ के विषय में विस्तार से बताएं। कृष्ण से प्रश्न सुनकर महाराज नंद ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, यह उत्सव न्यूनातिक परंपरागत है। चूंकि वर्षा राजा इंद्र की कृपा से होती है और बादल इसके प्रतिनिधि हैं, और चूंकि हमारे जीवन के लिए जल इतना महत्वपूर्ण है, अतः हमें वर्षा के नियामक महाराज इंद्र के प्रति कुछ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। अतः हम राजा इंद्र को प्रसन्न करने का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि उसने कृषि कर्मों को सफल बनाने के लिए ही बादलों को प्रचुर वर्षा के लिए भेजा है। जल अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना ना तो हम जोत बो सकते हैं, ना अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। यदि वर्षा ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये वर्षा धर्म, अर्थ तथा मोक्ष के लिए आवश्यक है। अतः हमें परंपरागत उत्सवों को छोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई काम, लोभ या भय के कारण इनका परित्याग करता है, तो उसे ये शोभा नहीं देता। इसे सुनकर भगवान कृष्ण अपने पिता तथा वृंदावन के समस्त प्रौढ़ ग्वालों के समक्ष इस प्रकार बोले, जिससे वरिष्ठ स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हो जाए। उन्होंने सुझाया कि यज्ञ बंद कर दिया जाए। इंद्र को प्रसन्न करने वाले
इस यज्ञ का निषेध करने के दो कारण थे। पहला, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, किसी भौतिक उन्नति के लिए देवताओं की पूजा करना व्यर्थ है। देवताओं की पूजा से प्राप्त होने वाले सारे फल क्षणिक होते हैं। केवल अल्पज्ञ ही ऐसे क्षणिक फलों में रुचि रखते हैं। दूसरा, देवताओं की पूजा से जो भी क्षणिक फल प्राप्त होता है वह वस्तुतः भगवान की कृपा से होता है। भगवत गीता में स्पष्ट कथन है, माया भीतान हीतान, देवताओं से जो भी लाभ मिलता है वह वास्तव में भगवान द्वारा प्रदत्त है। भगवान की अनुमति के बिना कोई किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। किंतु कभी कभी देवता भौतिक प्रकृति की वशीभूत होकर द्रवित हो उठते हैं, अपने को सर्वस्व समझकर भगवान की सर्वोच्चता भूल जाते हैं। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि इस प्रसंग में तो कृष्ण राजा इंद्र को कुपित करना चाहते थे। कृष्ण का अवतार असुरों के विनाश तथा भक्तों की रक्षा के लिए हुआ था। इंद्र निश्चित रूप से भक्त था, असुर नहीं, किंतु चूंकि वह द्रवित था इसलिए कृष्ण उसे पाठ पढ़ाना अर्थात शिक्षा देना चाहते थे। सर्वप्रथम उन्होंने इंद्र को कुपित करने के लिए वृंदावन में ग्वालों द्वारा की जाने वाली इंद्र पूजा बंद करा दी। मैं शिखा सिंगला माता जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अब वे इस लीला को आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस उद्देश्य से कृष्ण इस प्रकार बातें करने लगे मानो वे नास्तिक हों और कर्म मीमांसा दर्शन के समर्थक हों। इस दर्शन के समर्थक भगवान की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। उनके मत से यदि मनुष्य को उसके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान भी हो तो उसके पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता तब तक वह कोई फल नहीं दे सकता। उनका कहना है कि देवता या ईश्वर की पूजा करने के बजाय मनुष्यों को चाहिए कि अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दे और इस प्रकार अवश्य ही अच्छा फल प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण अपने पिता से कर्म मीमांसा दर्शन के इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार बातें करने लगे। उन्होंने कहा, हे पिता, मेरे विचार से अपने कृषि कार्यों की सफलता के लिए आपको किसी भी देवता के पूजन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्पन्न होता है और वर्तमान कर्म के फलों को साथ लेकर इस जीवन को त्याग देता है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और इस जीवन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख तथा दुख, लाभ तथा हानि भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के प्रतिफल हैं जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए जा चुके हैं। महाराज नंद तथा अन्य गुरुजनों ने तर्क किया कि प्रमुख देवता को प्रसन्न किए बिना केवल भौतिक कर्मों द्वारा कोई शुभ फल की प्राप्ति नहीं कर सकता। यही तथ्य है। उदाहरणार्थ, कभी कभी देखा जाता है कि उत्तम डॉक्टर द्वारा उत्तम चिकित्सा तथा उपचार करने पर भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तम उपचार या उत्तम डॉक्टर द्वारा किया गया प्रयास ही रोगी के अच्छा होने के कारण नहीं है। इसमें भगवान का हाथ अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता द्वारा अपनी संतानों का लालन पालन ही बच्चों के सुख का कारण नहीं होता। कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता द्वारा समस्त सावधानी बरतने के बावजूद बच्चे बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। अतः फल के लिए भौतिक कारण पर्याप्त नहीं है। इसमें भगवान की स्वीकृति प्रसाद आवश्यक है। अतः नंद महाराज ने दलील दी कि कृषि कर्म में अच्छा फल पाने के लिए हमें वर्षा के अधिष्ठाता देव इंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इस तर्क को काटते हुए कहा कि देवता केवल उन व्यक्तियों को फल देते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति को कभी कोई फल नहीं दे सकते जिसने अपना नियम कर्म पूरा न किया हो। अतः देवता कर्म संपन्नता, कर्म परायणता पर आश्रित हैं और उन्हें किसी को अच्छा फल देने की पूरी छूट नहीं है। अतः किसी को उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पिताजी, इंद्रदेव की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपना कर्म का फल प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अपने कर्म की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार हर व्यक्ति कार्यरत हो जाता है और सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या देवता, इसी प्रवृत्ति के द्वारा अपना अपना फल प्राप्त करते हैं। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार उच्च या निम्न शरीर प्राप्त करते हैं और शत्रु या मित्र बनाते हैं। मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करना चाहिए और विविध देवताओं की पूजा में ध्यान नहीं मोड़ना चाहिए। सारे देवता समस्त कर्मों
के सही कार्यान्वयन में से प्रसन्न होंगे, अतः उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा यही है कि हम अपना कर्तव्य सुचारू रीति से करें। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति निर्दिष्ट कर्म किए बिना सुखी नहीं हो सकता। अतः जो ढंग से निर्दिष्ट कर्म नहीं करता वह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। ब्राह्मण का उचित निर्दिष्ट कर्तव्य वेदों का अध्ययन है। प्रशासक वर्ग अर्थात क्षत्रियों का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि, व्यापार तथा गांवों की सुरक्षा करना है और शूद्रों का कर्तव्य है उच्च वर्गों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रिय तथा वैश्यों की सेवा करना। हम वैश्य जाति के हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य खेती करना, कृषि उत्पादनों का व्यापार, गांव की रक्षा या बैंक में लेन देन का कार्य करना है। कृष्ण ने अपना संबंध वैश्य जाति से जोड़ा क्योंकि नंद महाराज अनेक गायों की रक्षा करते थे और कृष्ण उनकी देखरेख करते थे। उन्होंने वैश्य जाति के 4 प्रकार के कार्य गिनाए हैं: कृषि, व्यापार, गौरक्षा तथा बैंक की व्यवस्था। यद्यपि वैश्यगण इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु वृंदावन वासी मुख्यतः गौरक्षा में ही लगे हुए थे। कृष्ण ने अपने पिताजी को आगे भी बताया, यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के अधीन चल रहा है। ये तीनों गुण उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप है। बादल की उत्पत्ति रजोगुण के प्रभाव से होती है, अतः वर्षा का कारण यही रजोगुण है। इस वर्षा के बाद भी जीवों का फल अर्थात कृषि कार्य में सफलता मिलती है। फिर इंद्र को इस कार्य से क्या प्रयोजन है? यदि आप इंद्र को प्रसन्न ना भी करें तो वह क्या कर सकता है? हमें इंद्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। यदि वह हो भी तो वह समुद्र के ऊपर भी तो जल बरसाता है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हम पूजा करें या ना करें, वह समुद्र तथा पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है। जहां तक हमारी बात है, हमें किसी अन्य नगर या गांव या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। नगरों में बड़े बड़े महल हैं, किंतु हम तो वृंदावन के इसी जंगल में रहने से ही संतुष्ट हैं। हमारा संबंध गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन के जंगल से है, अन्य किसी से नहीं। अतः हे पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे स्थानीय ब्राह्मण तथा गोवर्धन पर्वत संतुष्ट हो सके। हमें इंद्र से कोई सरोकार नहीं है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, क्योंकि तुम कह रहे हो इसलिए मैं स्थानीय ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के लिए एक पृथक यज्ञ का आयोजन किए देता हूँ, किंतु इस समय मुझे यह इंद्र यज्ञ करने दो। किंतु कृष्ण का प्रत्युत्तर था, पिताजी आप विलंब ना करें। आप गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का प्रस्ताव रख रहे हैं उसमें काफी समय लगेगा। अतः अच्छा हो यदि इंद्र यज्ञ के लिए आपने जितनी तैयारियां की हैं उनसे तुरंत गोवर्धन पर्वत तथा स्थानीय ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया जाए। अब मैं सोनालिका माता जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अब वो इस लीला को आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंततो गत्वा महाराज नंद को पसीजना पड़ा। तब ग्वालों ने कृष्ण से पूछा कि वे यज्ञ को किस तरह करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उन्हें ये आदेश दिए, यज्ञ के लिए एकत्र किए गए अन्न तथा घी से विविध पकवान यथा चावल, दाल, हलवा, पकौड़ी, पूरी तथा दूध के व्यंजन यथा खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, संदेश एवं लड्डू बनाए जाए और फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर वैदिक मंत्रों के उच्चारण सहित अग्नि को आहुति प्रदान की जाए। ब्राह्मणों को दान में सभी प्रकार के अन्न दिए जाए। सारी गौओं को सजाकर उन्हें अच्छा चारा दिया जाए। इसके बाद ब्राह्मणों को दान में धन दिया जाए। जहाँ तक निम्न स्तर के पशुओं या लोगों का प्रश्न है, कुत्तों और चंडालों और अछूत समझे जाने वाले पंचम श्रेणी के लोगों को भी पेट भरकर प्रसाद दिया जाए। गौओं को उत्तम घास खिलाकर तुरंत ही गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए। इस यज्ञ से मैं परम संतुष्ट होऊंगा। कृष्ण के इस कथन में वैश्य जाति की समस्त अर्थव्यवस्था का वर्णन हुआ है। मानव समाज की सभी जातियों में तथा पशु जगत में गायों, कुत्तों, बकरियों आदि में प्रत्येक जीव को अपनी अपनी भूमिका अदा करनी होती है। हर एक सदस्य को संपूर्ण समाज के लाभ के लिए सहयोग से काम करना होता है। इसमें न केवल सजीव पदार्थ अपितु पर्वत तथा भूमि जैसे निर्जीव पदार्थ भी सम्मिलित हैं। वैश्य जाति का विशेष दायित्व रहता है कि समाज के आर्थिक विकास के लिए वह अन्न उत्पन्न करे, गौओं की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य पदार्थों का यातायात करे तथा बैंकिंग और अर्थ को संभाले। इस कथन से हमें यह ज्ञात होता है कि यद्यपि कुत्ते तथा बिल्लियां अब इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं कि
उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु गौओं की रक्षा कुत्तों बिल्लियों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन से हमें अन्य संकेत यह मिलता है कि उच्च वर्गों को चंडाल या अस्पृश्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आवश्यक रक्षा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है, किंतु इनमें से कुछ मानव समाज की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, किंतु कृष्ण भावना अमृत होने पर हर एक के लाभ का ध्यान रखा जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन गोवर्धन पूजा नामक यज्ञ को मान्यता देता है। भगवान चैतन्य की समस्तुति है कि चूंकि कृष्ण पूजनीय है, अतः उनकी भूमि वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत भी पूजनीय है। इस कथन की पुष्टि के लिए कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा उनकी पूजा के ही समान है। तब से आज तक गोवर्धन पूजा की जाती है, जो अन्न नाम से विख्यात है। इस मौके पर वृंदावन तथा वृंदावन के बाहर के मंदिरों में भी प्रचुर मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है और जनता में खुले दिल से बांट दिया जाता है। कभी कभी यह भोजन भीड़ में फेंक दिया जाता है और लोग उसे जमीन से भी उठाकर खाने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण को अर्पित प्रसाद कभी दूषित नहीं होता, भले ही वह भूमि पर क्यों न फेंका गया हो। अतः लोग इसे एकत्र करके परम प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों को सलाह दी कि यदि इंद्र यज्ञ बंद करके इंद्र को दंडित करने के लिए गोवर्धन पूजा प्रारंभ की जाए, क्योंकि इंद्र स्वर्ग का परम नियंता होने के कारण अत्यंत गर्विला हो गया था। नंद महाराज तथा सीधे साधे ईमानदार ग्वालों ने कृष्ण का प्रस्ताव मानकर उनके द्वारा समस्तुत सब कार्य विस्तार से संपन्न किए। उन्होंने गोवर्धन की पूजा तथा उसकी परिक्रमा संपन्न की। गोवर्धन पूजा के उद्घाटन के बाद आज भी वृंदावनवासी सुंदर वस्त्र पहनकर गोवर्धन पर्वत और गौओं को आगे करके परिक्रमा करने के लिए उसके निकट एकत्र होते हैं। भगवान के आदेशानुसार नंद महाराज तथा ग्वालों ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रसाद समर्पण करके गोवर्धन की पूजा की। वृंदावन वासी एकत्र हुए। उन्होंने अपनी अपनी गौएं सजाई और उन्हें हरी हरी दूब दी। फिर गौओं को आगे करके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। गोपियों ने भी अपने को अच्छे वस्त्रों से सजाया और वे बैलगाड़ियों में बैठकर कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। यहाँ एकत्रित ब्राह्मणों ने गोवर्धन पूजा के लिए पुरोहित बनकर ग्वालों तथा उनकी पत्नियों गोपियों को आशीर्वाद दिया। जब सब कुछ पूरा हो गया तो कृष्ण महान दिव्य रूप धारण किया और वृंदावन वासियों के समक्ष घोषित किया कि वे स्वयं गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाए कि स्वयं कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत अभिन्न है तथा वहां पर अर्पित सारे व्यंजनों को कृष्ण खाने लगे। आज भी कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत की अभिन्नता का सम्मान किया जाता है और परम भक्तगण गोवर्धन पर्वत से शिलाखंड लेकर उसकी उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार मंदिरों में कृष्ण के श्री विग्रह की है। इसलिए कृष्ण भावना अमृत अनुयायी गोवर्धन एक सेकंड दिख नहीं रहा मुझे, एक सेकंड। हाँ, कृष्ण भावना अमृत अनुयायी गोवर्धन पर्वत से छोटी छोटी शिलाएं एकत्र करके अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यह पूजा श्री विग्रह पूजा के ही समान है। जिस रूप में कृष्ण ने भोग लगाया था उसको अलग से बनाकर कृष्ण तथा अन्य वृंदावन वासियों ने उसी तथा गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। साक्षात कृष्ण तथा गोवर्धन पर्वत के विशाल रूप को नमस्कार करते हुए कृष्ण ने उस सभा में घोषित किया, जरा देखो तो कि गोवर्धन पर्वत किस प्रकार यह विशाल रूप धारण किए है और सारी भेंटें स्वीकार करके हम पर अनुग्रह कर रहा है। मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा जिस प्रकार से संपन्न की है, यदि कोई उस रूप में नहीं करेगा तो वह सुखी नहीं रहेगा। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं। जो गोवर्धन पूजा संबंधित निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उसे ये सांप काटेंगे और वह मर जाएगा। गौवों तथा अपने कल्याण के लिए विश्वस्त होने के लिए गोवर्धन के निकटवर्ती समस्त वृंदावन वासियों को इस पर्वत की पूजा
उसी रूप में करनी चाहिए जैसा मैंने बताया है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा रूपी यज्ञ संपन्न करके वृंदावन के समस्त वासियों ने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और बाद में वे अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोवर्धन पूजा नामक 24वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रस्तुत सभी वैष्णवों को मेरा प्रणाम। हमें ये मौका देने के लिए तथा श्री कृष्ण लीला को ध्यान से सुनने के लिए मुझे मेरी टीम की ओर से मैं आप सभी भक्तों का खूब खूब आभार व्यक्त करती हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते थे, जो व्यक्ति रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध पीता है, गर्म दूध पीता है, और श्री कृष्ण पुस्तक को पढ़ के सोता है, भगवान कृष्ण स्वयं उनके स्वप्न में रात को आते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी भक्तों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू यू। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you so very much. so very much. So we are about to finish our Zoom session on Janmashtami. We are just awaiting Rambhadra Prabhu to join us. He will join us shortly. The mayor of Gurgaon is visiting temple right now, so he will join us shortly. But from all of us, from the back end team, we want to thank all of you for taking various sevas. और आप सब लोगों ने enthusiasm से किया, और like last year again we were able to do some seva jointly. So thank you so very much. So we will just, I think, another 2 minutes, Prabhuji will come. And would anybody like to share आज जो हुआ प्रोग्राम कैसा लगा? आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? You can come online and share कि कैसा रहा प्रोग्राम, कोई comments, some improvement for next year. Hopefully next year lockdown won't be there, I pray. So we'll be all in temple. So I request anybody wants to join and share कि क्या अच्छा लगा आज प्रोग्राम में आपको, या कोई कमेंट्स हो, कोई इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स हो, बताइए। रमेश गौरांग प्रभु को लेते हैं, कोई नहीं ला रहा है तो। रमेश गौरांग प्रभु, हाउ वाज द डे फॉर यू? ये बैठे हैं 4:30 से 4 बजे से लैपटॉप के सामने, बोथ ही एंड रानी प्रभु, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप सिंस मॉर्निंग। हाउ वाज द डे प्रभु जी? शेयर, आपसे पूछते हैं। Hare Krishna Prabhuji. It's so hustle bustle there. A lot of noise coming from outside as well. So and too many. ये हमारा एक IT वर्क स्टेशन बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। बट यस, इट इज वेरी, जैसे मैं ऑफिस का काम करता हूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ। बट आई डेंट रियलाइज दैट, आपने भी बताया है कि उस पर 4 बजे से लगे हुए हैं, तो पता ही नहीं चल रहा है प्रभु जी। जो सेवा मिल रही है बस वो करते जा रहे हैं। एंड इट वाज वेरी नाइसली, जो सारे ही जितने भी हैं ऑल, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई एम सीइंग दैट इवन नाउ देयर आर 104 प्लस जो अभी लॉग्ड इन है, और सबने बहुत ही आराम से अपने आप को म्यूट रख के हमें पूरा सहयोग देते हुए इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी बहुत मदद करी। और आप सबकी मदद के बगैर ये सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजिंग 100 से ऊपर के जो लोग हैं सब ऑनलाइन में, और सब जो है अटेंटिवली सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन्स पे कि हाँ वीडियोस ऑन है, जब भी हम पूछते हैं कुछ तो सब पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट्स वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू। वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी जिन्होंने आज हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you Prabhu. And tomorrow also we have a program, online program, full day नहीं है, चिंता मत करिए। So evening we have a program 6 to 9 because Prabhupada का 125वां appearance day है कल। So there are programs all over the world. So हम लोग भी ISKCON गुरुग्राम से we have scheduled
आप लोगों को मैसेज मिल जाएंगे सून। तो कल 6 बजे से प्रोग्राम है, 6 से 9। 6 से 9 का जो शो है आपका, वो इस्कॉन गुरुग्राम के लिए आप टाइम निकाल के रखिए। सो विल हियर congregation devotees glorify Srila Prabhupada in a very nice manner, and also kids will be joining us for another wonderful program tomorrow. So please keep your time free from 6 to 9 tomorrow evening. And Parth, how was your day? Apart from comparing, what did you do? इस सारा दिन लगे रही अभी team. Yes, Parth, share. Prabhu, there were multiple events which engaged the not only, I mean, the adults, but I think there were younger age children also that the Bhakt Prahlad school organized very well. So while I didn't participate like Rameshwar Prabhu, I was adding my own little bit of tech support. But I feel like these programs are, I mean, seeing the children, for example, sing the kirtans and be engaged in the games and things like that, make sure that they're also in contact with our Sanatan Dharma and our culture. So that's always, good to see that even the younger children are engaged. Wonderful. Yes. So this is the advantage of a festival, that persons for every age can be engaged. Especially Krishna consciousness, there are so many sevas that there is no end to engaging anyone and everyone in Lord's service. So what did you watch? Few of the programs, Parth? Yeah, Prabhu, I did, especially the children's program just now, the Prabhupada, the book reading, and in the morning as well, the Kirtan program. I think that was led, in fact, even all of the devotees here were also participating. So I myself enjoyed the Kirtan as always. And the 360-degree view, I think, was very unique this year because I went on YouTube and myself was exploring. So it was fun to look around the room and see who all were there, all the aartis and the darshan. So that was also really nice. Yes. So after this, after address by His Grace Rambhadra Prabhu, then we are going to request everybody, because this channel we will close, and we'll request everybody to shift to the YouTube and watch that great, awesome view in 360 degree. वो कभी नहीं देखा हमने ऐसे temple से 360 degree view. So we will shift there. I think Radhika Prabhu is here. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. So thank you so much, Prabhuji, for organizing such a event, Prabhuji. Actually बहुत टफ है हम लोग के लिए, तो बहुत कुछ है। असली तपस्या यही था कि सब लोग कैमरा के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे रहना, इट्स रियल तपस्या। बट रामेश्वर गौरांग को और आप लोग इतने अच्छे से करते रहे। मैं बीच बीच में लॉगिन करके देखता था, मैं देखता था रामेश्वर गौरांग को बैठे हुए हैं और गिरिराज को फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो बहुत हार्ट टचिंग था। एंड यहाँ पे भी मंदिर में बहुत सारा चीज हो रहा है एंड हम सब लोग आप लोगों को मिस कर रहे हैं। बहुत सारा इवेंट हो रहा है, बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है एंड सब कुछ इतना फास्ट है कि पता ही नहीं चला कि जन्माष्टमी कैसे बीत गया। इस दिन का हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे थे। पर एक होप है कि कल श्रील प्रभुपाद का 125th अपीयरेंस डे है, तो जितना भी कमी रह गया होगा जन्माष्टमी मनाने में, कल हम सब लोगों को उत्साह पूर्वक पार्टिसिपेट करना है। और 125th एनिवर्सरी जन्माष्टमी तो पूरे दुनिया को पता है, 125th एनिवर्सरी इस बार पूरा ग्लोबली होने वाला है। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद को गवर्नमेंट ने भी इतना रिकॉग्निशन दिया एंड अभी प्रभुपाद के इतने सारे डिसाइपल्स को इतना सारा उपाधि उपलब्धि मिल रहा है। तो ये सारा प्रभुपाद का ग्लोरीज है जो फैल रहा है। तो मेरे को लगता है कि कल हम लोग को और भी उत्साह आएगा, और भी मजा आएगा। एंड कल का भी प्लान पूरा राधा किशोरी माता जी एंड गिरिराज को ने प्लान किया है, तो कल भी बहुत मजा आने वाला है। आप सब लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा 6 PM में। और मॉर्निंग में भी हम लोग 360 डिग्री कैमरा से आप लोगों को प्रभुपाद का अभिषेकम दिखाएंगे, आरती होगा, कीर्तन होगा। तो आप लोग 10 बजे मॉर्निंग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज लेट नाइट होगा, कल अर्ली मॉर्निंग होगा। तो कुछ 2-3 दिन का तपस्या है। एंड अभी एक्चुअली कुछ शायद मेयर आए हुए हैं प्रभु जी से मिलने के लिए, दैट्स वाई हम लोगों को आपको वेट कराना पड़ रहा है। तो आप लोग प्लीज 2 मिनट बने रहिए एंड आप लोगों को इससे जन्माष्टमी का
निर्जल व्रत करने का फल प्राप्त होगा अगर आप लोग कैमरा ऑन कर करके गर्मी में बैठे रहे और थोड़ा सा प्रभुपाद का एंड कृष्णा का कृपा का याचना करें, ताकि हम लोग कुछ इस जन्म में अच्छे से भक्ति करके एक दूसरे का संग करते 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 भगवान को प्रसन्न करें, एक दिन श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करें और भगवान के घर वापस चले जाएं। हम लोगों के लिए यही होप है ये एसोसिएशन का। तो प्लीज प्रभु जी, गिरिराज प्रभु, यू कैन से समथिंग प्रभु जी। आई जस्ट सेड फ्यू थिंग्स। मैंने बोल दिया जो बोलना था प्रभु जी, मैं तो 10 मिनट से बब्बा कर ही रहा था। So we were waiting for you and Rambhadra Prabhu to come. Share Prabhu ji, how was the day? Just share. So day was प्रभु जी एक्चुअली दिन हुआ ही नहीं प्रभु जी, रात ही रात रह गया सब कुछ। कल रात से हम लोग लगे हुए थे कि सब कुछ फिनिश हो जाए हो जाए हो जाए। लग रहा था कि अब जाके सो जाएंगे, अब जाके सो जाएंगे। अभी भी यही लग रहा है, अब जाके सो जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, लेकिन बहुत आनंद आया। कई लोगों ने ऑनलाइन अभिषेकम किया, कई लोगों ने ऑनलाइन आरती किया और लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि घर बैठे